Thank you very much, colleagues, ladies and gentlemen, for joining us for today's session on DRR policy implementation in Pakistan, in line with Sendai framework on disaster risk reduction. Today's session is part of a series of seminars being conducted in collaboration with Oxfam in Pakistan. The themes revolve around climate resilience. As we move towards COP, we thought it a best time to discuss Pakistan's policy implementation vis-a-vis DRR and how well are we positioned in terms of implementation in line with the Sendai framework on disaster risk reduction. Today's discussion will start off with a presentation on a position paper that has been developed by my colleague Salman Danish, who will be presenting a brief presentation and also come up with some of the fundamental basic contours of today's discussion. Before I get into the presentation, I would briefly like to introduce to you the panelists for today. We have with us Ms. Alishba Khan from UNDP. She is the Program Operations Analyst for Flood Recovery Program under the Resilience, Environment and Climate Change Unit. We have Said Moiz Kakakhel Saab with over 15 years of experience in program design, delivery, advocacy, and meal. We have Fahim Saab, program development manager at SPO, and of course, the learned Mr. Ahmed Kamal Saab, chairman, Federal Flood Commission. So before I go to our esteemed panelists, I would like to request Salman for his presentation based on his paper. And the idea for this presentation is also share some preliminary findings with the speakers and the general audience, and also invite some pertinent feedback and improvements for the papers to develop a final revised edition of the paper. So Salman, over to you. Thank you. Thank you, Khabar. My presentation for today is on my paper, appropriately titled DRR Policy Implementation in line with Sendai Framework on Disaster Risk Reduction. So a bit of background, I'm sure all of us already know most of these facts. Pakistan has for the past 2 decades been among the top 10 countries on the Climate Risk Index maintained by the German Watch. And what we might not know is that the score we have is quite low. It's 29 based on 19 years of data. This puts us just one spot above Bangladesh, and their population density is much higher than ours. So that's saying something. Apart from that, the fatalities we have are 0.30 fatalities per 1 lakh inhabitants, and around 3.8 billion in direct financial damages. That's from 173 extreme weather events, including floods, heat waves, earthquakes. And I know there's a figure floating around that's 4 billion, but that's more of an estimation, and this is the official figure. And then we come to the disaster needs assessment for DRR efforts. So the PDNA report released in 2022, the PDNA report revealed that the worst province struck was the Sindh province, and this would increase their poverty from 8.9% to 9.7%. And Sindh sustained almost 72% of the total damages caused by the floods. And that's a huge amount. And then we go on to the comparative flood from 2010. These were floods of similar magnitudes, but the response could not have been more different. In 2010, there was a lot of international actors and humanitarian aid coming through. But in 2022, we see that that's not really a case, because in 2010, there was an aid of approximately $3 billion, whereas in 2022, only around $297 million were offered. And the reason for that is, for this disaster, we have been offered aid in the form of
climate financing. So that has left Pakistan behind, and we have to go for a local response. So although NDMA and PDMA have tried their best, there are some lacking points, and we need to work on that. Next. So let's go over what the Sendai framework is and what are its targets and goals. So Sendai framework is a global framework for DRR, basically disaster risk reduction and governance. So we have 7 targets. You can see them on display. Notice the substantially reduce and substantially increase. We can all read the goals themselves, but what I want to focus on is the word substantially. There are no concrete commitments associated with these goals, sorry, with these targets, and that is something we have to keep in mind. So I'll give you just a couple of seconds to go through these goals. Okay. Okay, so now we come to the guiding principles behind these goals. The guiding principles, there are 4 of them. First is understanding the disaster risk in all its forms, such as vulnerability, capacity, exposure of persons and assets, hazard characteristics, and the environment. Then we come to strengthening the disaster risk governance. If we don't have good governance, obviously any project can fail, but more so for the climate-oriented one, because lives are at stake here. The third guiding principle is investing in disaster risk reduction for resilience through public and private investment in DRR by undertaking structural and non-structural measures to enhance the economic, social, health, and cultural resilience of people, communities, countries, and their assets, as well as the environment. The fourth principle is enhancing disaster preparedness for effective response and to build back better in recovery, rehabilitation, and reconstruction. So we have to prepare for the disaster in a better way, and then we have to move with the recovery in a better way. So now we circle back to what I said to focus on in the previous slide, the word substantially. One of the most critical issues is that Sendai framework for DRR, it lacks any concrete commitments, either financial or numerically in terms of preventing the loss and damage and the stuff like that, actually reducing the risk. And the other one is, while investment in disaster risk reduction and resilience building have been enhanced to some extent, an increase in frequency of disasters, lack of attention to disaster risk reduction at the local level, and limited resources and capacity. These are some things that are holding us back from achieving our ultimate goals of reducing disaster risk. The national DRR policy. So now you can see it says the 2013 policy because we never got around to updating it. I think there was a draft floating about in 2021, but nothing really came up. Just plan, not the policy. Policy is stuck at 2013. Yes, response plan. Yes. So as we now know, this is a very old policy. Like we need to have like a specific DRR policy now. Plans, they don't really come to fruition because there's no real implementation of these plans. If we have a guiding policy, then perhaps we can achieve better results with that. Despite the resource constraints, Pakistan has still managed to have some progress on DRR front, but that is oftentimes debatable and not up to the mark as we should be. Now the year is 2023. So we're somewhere between the halfway point of the Sendai framework itself. So there was a study done, Pakistan's voluntary national report for the midterm review of implementation of Sendai framework, or simply called the midterm review of the Sendai framework. This midterm review assessed the progress and challenges in terms of reducing disaster risk, identifying new and emerging issues, and changes in the context
since the implementation started back in 2015. And the midterm review also gives recommendations for prioritized, accelerated, and integrated international, national, and local cooperation and actions to be taken till 2030. Okay. So now there's another aspect we need to consider while considering overall our disaster risk reduction policies is the inclusion concept. So you can see there are three groups that I have listed as particularly vulnerable we need to account for. These are expecting and new mothers and females in general in the disaster struck areas, differently abled persons, and elderly people. So these are three distinct groups that we need to cater for. In the 2022 floods, we saw and we heard and was reported that there was quite a bit of inclusion for females and mothers, and food for the newborns and all of these related items. But old people and differently abled people, and oftentimes, as written, there's significant overlap. They are particularly vulnerable to the impacts of these disasters due to their limitations physically and or mentally. Both groups often face social isolation, inadequate access to information, and dependency on caregivers. The National Disaster Management Plan acknowledges the need to ensure the safety and well-being of all segments. This includes the elderly and differently abled persons. However, as we know, implementation still leaves a lot to be desired. So how can we improve the inclusion? Well, there are some policies and steps we can take. Data collection, if we have better data, we can better quantify which segment needs what kind of protection. This includes the analysis part, awareness and education. So vulnerable segments, they need the same access to information or the same level of access to information education on DRR and how they can keep themselves safe or how their caregivers can provide them safety. So that's one aspect. Then there's accessibility, which I'm sure you'll agree with me. Infrastructure-wise, Pakistan is not that high up with the global standards. Even if you go to a bank, you visit a bank, there's a ramp, but no normal human being, superhumans perhaps, but no normal human being can climb that ramp without using a motorized vehicle. I'm sure all of us have seen that. So infrastructure, evacuation routes, emergency shelters, they should all be accessible to both the elderly and those with disabilities. Inclusive policies, again, when we develop and implement policies, they should be such that they include these people explicitly, and they should be done with their consultations. Participation, this ties into this aspect that involve the segments in question in the decision-making process related to DRR, drawing upon their experiences, insights, and then healthcare and medication. This is quite important because in a disaster situation, the last thing you have on your mind is to carry your medications with you. So we need to ensure that they have access to essential healthcare and medications during and after disasters. Sorry. Now we take a brief look at the achievements we have done towards implementing Sendai framework. The first is, of course, the establishment of a functional disaster risk management institutional mechanism, which, as we all saw in the previous seminar, was quite detailed. But roughly, we have NDMA at the federal level, PDMAs at the district level, and various other organizations, including DDMAs at the district and town levels. The development of a comprehensive DRM and DRR policy framework. We have these policies, but again, implementation is lacking. Increased coordination among all stakeholders, which is, as you might remember, a significant guiding principle of the Sendai framework. And then we come to the next one, improve weather forecasting and monitoring. And these give us the ability to have early warnings for in case of disasters or such events. Then there's the establishment of a dedicated National Disaster Risk Management Fund, NDRMF.
which Alishba is most familiar with. Formally. Increased awareness on disaster and climate risk in the country. So we do now have awareness of these things. What we need is capacity building. What we need is to have the capacity to actually implement these at the local level, national, and the federal level. So several initiatives in Pakistan have successfully integrated these vulnerable groups into DRR efforts. One of them is HelpAge, where Moisab is from. One is Oxfam. Oxfam is always educated for people with disabilities. So these are the achievements that we actually have done somewhat. Next, we have the challenges. So the first challenge is our country is highly vulnerable to climate change because we are exposed to desert winds, we are exposed to the sea winds. So there's a lot of stuff going on that makes us quite vulnerable, and this includes our high population density as well. Then we have limited financial resources and funding for disaster risk reduction initiatives. And again, limited institutional capacity and expertise for disaster risk reduction at the local level. Even if we have learned people at the federal level, that doesn't translate that well to the local one. And then the cross-cutting nature of DRR and climate change adaptation requiring wider participation and contribution from all stakeholders. So one thing I should mention is that another limitation with the Sendai framework is this does not take climate change adaptation and DRR as a cross-cutting issue. That's a main point to be noted. And then the lack of support for DRR policy and programs due to frequent changes in political priorities and weak governance. So this is something we've all seen, we've all acknowledged, even if no one wants to really acknowledge that. And insufficient focus on understanding the root causes of disaster risk, including poverty, inequality, and environmental degradation. So we can always treat the symptoms, but until we treat the root causes, we won't get too far. I'll just start to wrap up. So these are some of the stakeholder recommendations that we have come across, and we have collated them here for you. To address that infrastructure experts and communities, Pakistan may move forward with the following strategies. So these are both from the key informant interviews, the focus group discussions, the individual interviews. All of these include both the communities and the experts. So first, increasing the financial resources and funding for DRR. Build the institutional capacity and expertise for DRR at local level. Promotion of wider participation and contribution from all stakeholders in DRR and climate change adaptation. Again, we need to take these two concepts as cross-cutting themes. Ensuring that the DRR policies and programs are supported by all political factions, regardless of changes in government. So this is, I think, a main point because as we were discussing earlier, every 2 years, there's a change in the thought process and then everything goes back to zero. Focusing on understanding the root causes of disasters, as we've already discussed, establishing and strengthening early warning systems to provide timely alerts and preparedness measures for communities at risk. This is quite important. Local communities should be given a say right from the planning to implementation to evaluation stages of any community-based DRR plans and projects, because without community ownership, I don't believe anything can be sustainable. Because once the funding runs out, the organization implementing it, they might go away, but the people, if they truly own that project, then they can keep it sustainable. And of course, the most important one, strengthening coordination between government agencies, NGOs, and civil society is essential to ensure the proper implementation. And then we have improving the coordination among, again, this is pretty much a repeat of what that says. But now this includes community-based organizations, self-help groups, and private sector. We need to coordinate all of that effort. And those actors that are operating at a local level, they need to be directed effectively rather than in a hodgepodge manner. Community-driven approaches, which can lead to more effective and context-specific strategies, as well as better acceptance and cooperation during emergency response.
So we need to be careful of the cultural context as well, the ethnic concept, so not to offend the people. Otherwise, they won't have, again, they won't take ownership of the initiatives. NDMAs and PTMAs should extend full support to DDMAs and other local organizations to ensure that they fulfill their mandated roles and responsibilities. Uh, Additionally, contingency stocks should be stored in vicinity of vulnerable areas so that boats and other relief and rescue work can be started immediately. So this, I think, is a very important point, because oftentimes you do have stocks, but they're not in the relevant area. So since they face this issue as well, they didn't have the required stock of boats and life jackets and all of these items. So I think localization of these assets should be a priority. Investing in training programs for communities, local authorities, and response teams. Again, we have to enhance their capacities so they can tackle these issues effectively. Disaster management strategies to address specific hazards prevalent in a region, such as floods or heavy rains. This ensures targeted and effective responses. So we have seen some of this happening, because in Murray Hills, we know when there's a snow season, we know when there's going to be a blizzard. So there are already machines strategically placed at various spots, so they can immediately start clearing up the roads in case of these disasters. Incorporating lessons from the post-disaster recovery efforts can help communities bounce back stronger, reduce vulnerabilities, and build back better. Ongoing efforts are needed to ensure that the inclusion of vulnerable groups in DRR and social protection remains a priority. And finally, investments in research, data collection, and capacity building can further enhance the inclusivity of disaster resilience efforts. So this circles back to those methodologies I discussed earlier for inclusivity. That's basically the end of the presentation. I now give the mic back to Khabar. Thank you, Salman. I think if you ask me my couple of takeaways of what I heard resonating more with myself when you were giving that presentation is that maybe the policy and legal framework might be in place, but there is a question in terms of implementation, coordination, stakeholder engagement, risk assessment, early warning systems, community engagement, and monitoring, evaluation, and reporting. I'll take these questions one by one to the panelists. So first of all, if I can come to you, Fahim Saab, and bearing in mind. सॉरी, थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, जब एक इधर से ऑफ होगा उधर से, अदरवाइज वो कट हो जाएगा. ये हमारे को सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है. Thank you very much. Thank you. And I would like to acknowledge here when Salman was talking about that we have collected the data from the field, from communities. That is because of our partners, SPO and Indus Consortium. Thank you. So Fahim, bearing in mind your previous experience and currently at SPO, especially in terms of engaging with the community at the grassroots level, how well do you see existing DRR policies, its priorities and goals, and how well do they align with the framework, the Sendai framework? How well does it deliver for the people at the grassroots level, and where are those needs for improvement? Thank you very much. चलें, शुक्रिया. थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश होगी तो मैं उर्दू इंग्लिश दोनों में बात करूँगा. अच्छा, अगर मैं if I look back even 2 decades back, Pakistan achieved tremendous. The concept of disaster risk management, if I see, it is after 2005 earthquake that really turned around the whole scene. मैं अगर जल्दी से आपकी memories को refresh करूं और खुद भी देखूं तो पाकिस्तान, we back in 50s we using that West Pakistan National Calamities Act 1958. That was only the sole document that really served the relief assistance for the affected area. So then if I recall Emergency Relief Cell Cabinet Division 1971, that actually served as an institution
that disaster relief support at national level. Similar institutional arrangement was exist at the provincial level in the form of relief commissioners. That was pretty much reactive approach that we still, asking that we are still response to the disaster, not proactive. Then the chapter start when we transform National Disaster Management Ordinance 2007. That really create that governance structures that we are talking about. In terms of the policies, act structure, excellent systems we have, but the matter is the transformation into the actions. So that National Disaster Management Ordinance, basically UNISDR introduced paradigm shift from reactive to the proactive approach in the form of HUGO framework of actions that 2005 to 2015 that actually जिसका समझ लें कि ये जो Sendai है, that we proud was basically originated from that HUGO framework of actions. That Pakistan was signatory along with 168 countries. To fulfill global obligations and to cope with the challenges and issues emerged after 2005 earthquake, that Pakistan took steps to promulgate law and policies. Then, Sir, you was part of NDM at that time. National Disaster Risk Management Framework was come to exist that 2007 and 2012. That actually I'm giving this whole journey, how things move on, then I will give some brief update how Sendai and Pakistan policies are complement and where is the differences. So that really NDRMF serves as the overall guidance for the disaster risk management at all levels. And there was an excellent 9 priority area that I recall the same numbers, same recommendation that you uttered, the same. So since 2007, we are talking about those priorities. Then National Disaster Response Plan was introduced that really clarifies specific roles and responsibility of relevant stakeholders in emergency response, including SOPs. That was a turning point. Everybody was coming with a lot of suggestions, but no actions. Who is responsible? This document actually helped whose role is what, and then different sectors involved and they come up with some responsibilities. Then National Disaster Management Act 2010 established 3 levels of tiers that we really feel good that we have NDMA, PDMA, and different disaster district disaster management authority. Then devolution plan comes that really change the whole scenarios, how the things decentralized. We also don't forget the National Institute of Disaster Management. That's still we have. So that was actually Center of Excellence for Disaster Management. NDRMF अरे वो अलग ठीक NDM ठीक है हाँ वो सर मैं इसलिए उसमें उस वक्त हम नए जोश में थे ये इदारों के पास जाते थे हमें ट्रेनिंग दें जी so that was really the sense was to create an excellence center that really capacitate, and still we are lack of capacities in a lot of areas. Then National Disaster Risk Reduction Policy. What I have it 2012 and you was sharing 2013. I'm not sure. In my document, it was 2012. That. Yeah. So, bit of clarification. National Disaster Response Plan, हमारा 2012 में आया था. Policy आई थी 2013. ठीक है. चलिए मैं इसकी correction कर लूँगा. National Disaster Management Plan came in 2012. And it was approved by the National Disaster Management Commission on 25th February 2013. Yeah. And DRR पेपर में मौजूद है. और DRR पॉलिसी भी उसी साल आई थी. 13 में. ठीक है. अच्छा इसके बाद वही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान दैट वाज उसके साथ सर अगर आपको याद हो MHVRA की गाइडलाइंस आई थी, CBDRA में कैपेसिटी बिल्डिंग गाइडलाइंस. सो वी हैव वेरी एक्सीलेंट guiding documents exist,
And that really complement the whole scenario or whole paradigm of this disaster risk reduction. So I will not go into the details. So I will now come to the point, however, but in terms of Sendai, and definitely Pakistan DRR policy that established in 2013 aligned with several key principles and objectives outlined in Sendai framework for DRR. There are areas that require improvement to ensure that more comprehensive alignment with the Sendai framework goals and priorities. If I see the alignment with Sendai, the coincident reality is 2013 this policy come into exist, and then 2015 that Sendai. So what I can see that Sendai maybe take some actions from our policy as well, because that is the time is difference. If when we create the comparison alignment, there is no, that there is clear cut time difference, but it gives us a a flair or a sense that the global challenges and national challenges are almost same. There is a similarity. It is universal. The challenges that issue DR is a universal common issues. So multi-hazard approach that is common in both Sendai framework and our DRR policy. That both propagate for multi-hazard approach in line with Sendai framework and emphasis on reducing risk across various type of hazard, including natural and man-made disasters. Now man-made, a lot of climate or others, that time, you're right, the climate word was not pretty much people were using. Now the loss damage fund is on the base of that. Now the finance is actually determined from this climate change trends. Then vulnerability and risk analysis, both Pakistan DRR policy and Sendai framework, they focused on vulnerability and risk analysis. And for the DRR, it's consistent with the Sendai framework call for integration and inclusive measures to prevent and reduce hazard exposure and vulnerability. The third, community participation and resilience, both document really, they emphasize on this agenda. So the goal is to build resilience at all levels, from community levels to the national levels. Because most of our interaction in terms of the CBDRM approach and in terms of the interaction with the community, if we see this is micro level challenges issue that comes up the the larger scale. So challenge and issues are the same. Then strengthening infrastructure resilience, that both Sendai and DRR policy that really focused on, and they both emphasize that key infrastructure and lifelines should be more resilient, which in line with the Sendai framework target, and both ask for the target to reduce disaster damage to the critical infrastructure. Then another common alignment or complementarity is that capacity building. DRR policy aims to strengthen capacity at various levels, from local to national, which is inconsistent with the Sendai framework focus on enhancing preparedness for the response and recovery. Then very important, both documents really come up with integration into development planning, that we really call for integration, mainstreaming. So both documents really consider and address the disaster risk, aligning with Sendai framework call for integration measures across different sectors. Then very important that the NGO sector hold an agenda of transparency and accountability. Both documents really focused on these very important agenda. And highlight transparency and accountability in DR and intervention, which is in harmony with Sendai framework, emphasis on institutional and political measures. So these are some alignment. Now I quickly wrap up with some of
improvement that I would suggest that both in over DRR policy, and that must be revised. This is a strong recommendation. So our policy should have the global targets in it, include objective related to the capacity building and community resilience. It could benefit from setting specific quantitative targets in line with the global targets of Sendai framework, such as reducing disaster mortality and affected population. Then very important area is early warning system. Although in Pakistan we did a lot on this subject, but in the real term, if we see the damage and the losses and how people suffering, there is a lot of gray area in terms of implementation of early warning system. So for the Sendai framework places significant importance of early warning system, but Pakistan policy should provide more details on establishment and enhancement of multi-hazard early warning capacities. International cooperation is another area that we can improve. Policy should articulate strategies for international cooperation and support as outlined in Sendai framework to ensure that Pakistan receive adequate assistance for the DRR implementation. So now in terms of, we also talking about the GCF window of opportunity, how we can get more finance. There is other loss and damage fund that we can tab on. The other area, local level risk reduction, that maybe you feel it is not the area to improve, but I strongly believe to better align with the Sendai framework, Pakistan policy should provide clearer guidelines on strengthening local level risk reduction capacities, promoting community engagement. I think after that policy, we realize through our work that this is very important area, but our policy should really bang on this, its importance of local level risk reduction and community engagement. Thank you. Thank you. Thank you. Intervention की चूंकि थोड़ी सी आदत होती, तो let me just give you one information. While Sendai was negotiated, हम वहीं पे थे, कमाल साहब को पता है, इन्होंने कहा कि टारगेटिंग नहीं हुई है, तो उसकी वजह ये कि वहां पे एग्री नहीं हुआ था ये ड्राफ्ट. ये जो ड्राफ्ट है इस वक्त सेंडाई फ्रेमवर्क, इट इज नॉट ए साइंड एंड एग्रीड ड्राफ्ट. इट वाज द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर which is the international negotiation में अगर negotiation में कोई agreement नहीं होता, तो then the chair of the conference, they issue a draft, and this issue is drafted on the basis of ego and other some suggestion which came over during the negotiation. So that's why targeting वहाँ fix नहीं हुई थी, but this is good that for Pakistan we should have target of mortalities का और वो सारा चीजें. Thank you. Just a point of clarification. Thank you, Fahim Saab. Thank you, Dr. Saab. Fahim, thank you for highlighting the need of multi-hazard mapping and consequent early mapping, and also the similarities between our local policies and the Sendai framework. One of the things from your discussion that I really want further discussion on is the collaboration among stakeholders for implementation of DRR policy in Pakistan. In that regard, to see how well is there any sort of collaboration between different stakeholders from the government, from the development partners? If I can come to you, Alishba, and maybe if you can talk to us about the 4RF intervention of the UNDP, and also how does it see its role in terms of providing both assistance and collaboration with the government post 2022 floods? I hope I am audible. Okay. Thank you, Ahmed. Your question is very relevant to the aftermath of flood 2022 and specifically with the Sendai framework of disaster risk reduction. I also have contributed into the midterm review of Sendai framework with STPI and NDMA. And there are many points I identified there, which some of them have been discussed by Sulman.
but there are few points which are very concrete, and they should be incorporated into strategy, organization, and at every level. I would like to discuss that first. Then I will come on to how UNDP is contributing by application of 4RF, and how we are working on PPP model and community pulled model, and addressing the needs of the vulnerable people actually in Sindh, all over Pakistan. First, I will start with the decision making. One thing which is part of the midterm review of Sendai framework, that's the decision making. Decision making for any investment in the project, for development, and even the humanitarian sector should be done on some concrete basis, which should be qualitative and quantitative. When you talk about the quantitative analysis or quantitative aspect, the decision should be done based on some economic model or financial sustainable model. This could be, if I give you some examples, the decision could be, based on economic internal rate of return, net present value, or any other related factor. And we should also look forward towards the financial sustainability of the project, the life of the project, and the other factors as well. So first of all, if we, there is a very common saying, planning to fail is failing to plan. If you are not planning something well, and you are not doing investment correctly on some concrete basis, then how could you, expect the outcomes which we have the Sendai framework, it has some figures as well that we have to achieve these targets, and how will you account anything? How will you account these projects? So there, first of all, we need to improve the decision making. And I would like to identify that all the for all the PC1s, it is mandatory to have economic analysis, and the decisions for any government project, if the PC1 is, it is through the PC1, it is based on economic internal rate of return, NPV, or cost benefit analysis. So that's the mandatory part of PC1. But where, we discuss about non-government projects, where NGOs, INGOs, and other, partners are involved, the decision, I will encourage that decision making should be done on some concrete basis and evaluation. Secondly, I was just listening to Salman, and another thing which is part of the, Sendai framework, I would like to identify is that the project design. Whenever, any project is designed for the humanitarian or development sector, especially for the flood affectees, that it should be inclusive. It should not only include gender, disabled people, but, third gender should also be included. And the project design should be, it should not be simple houses, simple, flood protection wall, or some water conservation structure, or anything related for the flood or any other project. But it should, it should see what is the need of the community who are suffering. And the project design should be completely based on community pulled models, because there are cultural aspects as well, which need to be incorporated into the project. For example, this, in some areas, especially the districts, the women, they have their own culture, they are separated, and men are separated. This is just a simple example, but there are more. So these things should be, accounted for whenever, whenever any project is designed. Thirdly, I would, identify that we just talked about early warning system. The early warning system currently, MSA will, knows more about it, but we should incorporate technology into the early warning system as well. I'm talking about what is on ground in Pakistan. We are improving it, but we should look forward towards inclusion of technology into early warning system, and we need to advance it. So that we are aware of all the situation, disastrous situation, and any climatic impact, so that we are, informed, and we can take the precautionary measures. We are working on, NDRMF is working on developing raised platforms, water conservation structures, flood protection walls, Sindh people's housing for flood affectees, which is covering all the provinces, all the districts of Sindh. And they are, they are doing good work. They are developing houses which is addressing the needs of communities, and is actually based on community pulled model.
UNDP is implementing 4RF, and it is also designing all the projects which are addressing the needs of the community. And the UNDP project is based on Nexus approach. We are working on what is needed immediately and what is needed on the long-term basis. So this is how successful projects should be designed, which are addressing actually the need of the community. So these and another point, which MSAB just identified, that GCF is for the funding sources. We should look forward towards other funding sources as well, apart from GCF. Because there are when we apply for GCF, there are a number of challenges, including, for example, I will identify a few. You have to go through a lot of paperwork. It is time consuming, and there are more, a lot of challenges which we have discussed earlier as well. So I will encourage and give an opinion that organizations should look for other windows apart from GCF as well. That's all. Thank you so much. Thank you, Alishba. I think another aspect that has been revolving around today's discussion is how community voices can be effectively brought into the discussion and make it more of a bottom-up approach rather than a top-bottom approach. If I can next come to you, Moisab, taking cue from Alishba's discussion around having a bottom-up approach when we talk about DRR policy implementation at local, provincial, and national levels, what hinders an effective implementation, and also how can we make disaster risk management more inclusive, as was discussed earlier, in terms of elderly people, in terms of gender and other vulnerable groups. Thank you so much. अच्छा हुआ आपने मुझे कम्युनिटी वाला सवाल पूछा, क्योंकि समटाइम होता है, मैं जब MSc कर रहा था तो हमारे जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने हमें पढ़ाना था इस पे प्लांट प्रोटेक्शन पे, तो उन्होंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया कि प्लांट प्रोटेक्शन में जो है ना, ये जो पेस्टिसाइड है तो ये कैसे इवॉल्व हुए ना। एक लेक्चर हुआ, दूसरे लेक्चर में फिर उन्होंने शुरू की, तो मैंने उनसे वैसे पूछा, मैंने कहा सर जी ये इस हिस्ट्री से हमें क्या मतलब फायदा होगा, तो इसके बजाय अगर आप हमें वो चीज बताएं कि मैं कल को जाऊं फील्ड में और फार्मर पूछे कि ये बीमारी आई हुई है, इसके लिए दवाई दे दें या इसके तदारुक का कुछ बता दें, तो वो ज्यादा प्रैक्टिकल होगा रादर के हम हिस्ट्री में जाए। तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में, अच्छा हुआ फहीम साहब ने हिस्ट्री जो है तो वो कंप्लीट कर ली। अनफॉर्चुनेटली हम जब इसको लिंक करते हैं ना, कि जो ज्यादा उसमें जोर दिया गया कि आप लोकल लेवल को स्ट्रेंथन करें, लेकिन अभी तक हमें नजर आता है कि हम शायद नेशनल लेवल पे ज्यादा फोकस है, और जो जहां से रिस्पांस होना या जहां से लोकल स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, यानी आपका जो कम्युनिटी लेवल है या यूनियन काउंसिल है या आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल है, वो अनफॉर्चुनेटली हम मिस कर जाते हैं। और अभी आप भी अगर स्ट्रक्चर देखें, जैसे इन्होंने जिक्र किया कि DDMAs हैं, बट DDMAs इज जस्ट लाइक उन्होंने एक फॉर्मेलिटी पूरी की है कि ठीक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो DC होगा वो फोकल पर्सन होगा, और इन केस ऑफ डिजास्टर जो है तो वो उस रिस्पांस को लीड करेगा। उसमें ठीक है, कहीं पे हमें कोई एक्सेप्शनल केसेस भी मिलते हैं, जैसे लास्ट जब फ्लड हुआ और नौशहरा में अगर हम देखें तो वहां का जो ADC थी वो बड़ी एक्टिव थी, मतलब उसने पहले से लोगों को अवेयर करना कि इवैक्यूएशन करें, यहाँ पे जो है ना फ्लड आ रहा है, उसने अपनी तरफ से काफी कोशिश की, लेकिन उसके साथ लिंक जो है वो है कम्युनिटी को भी उनको अवेयर करना और उनको उनकी कुछ कैपेसिटी बिल्ड करना। उस दिन भी जब डिस्कशन यहाँ हो रही थी तो अवेयरनेस से ज्यादा इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर था। हालांकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी जगह पे अहमियत है, लेकिन लोकल लेवल पे जब तक जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है आप उसको स्ट्रेंथन करेंगे। अभी आप रीसेंट फ्लड में देखें, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स जो है वो
یا لوکل کمیونٹی نے کیا ہوگا یا لوکل جو گراس روٹ لیول کی آرگنائزیشن تھی انہوں نے کیا ہوگا, لیکن اس کو ہم مس کر جاتے ہیں. ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کچھ ماڈلنگ کی. ہم چونکہ اولڈر پیپل کی انکلوژن پہ کام کرتے ہیں اور پرسن ود ڈسیبلٹی کی انکلوژن پہ کرتے ہیں, سو وی ٹرائی ٹو ڈیولپ سم ماڈلس کہ جہاں پہ ہم جو ولنریبل گروپس ہیں ان کو بھی شامل کر سکیں. انفارچونیٹلی ہمارے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی این جی اوز کا فوکس ہوتا ہے ینگر پیپل پہ. اچھی بات ہے, 60% وہ کہتے ہیں جی ینگر ہے تو ان, اور وہ فزیکلی ایکٹیو ہیں تو اس لیے ہم ان کو ڈی آر آر میں فرنٹ پہ رکھتے ہیں. بٹ وی ڈیولپ اے ماڈل کہ آپ جب تک ولنریبل گروپس کو انکلوڈ نہیں کریں گے آپ وہ نیچے اس طرح کا رسپانس ڈیولپ ہی نہیں کر سکتے جو ان کی نیڈس کو ایڈریس کر سکے. آپ ابھی آپ اگر کوئی پلان ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اس میں اگر ڈسیبل پرسن کی رائے آپ نہیں لیں گے, اولڈر پرسن کی نہیں لیں گے تو ان کی نیڈس وہ رہ جائیں گی, کیونکہ جو فزیکلی اسٹرانگ ہے وہ اس چیز کو فیل ہی نہیں کر سکتا کہ جو ایک ڈسیبل کو پرابلمز آ رہی ہیں. جو سارے یہاں پہ ینگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید اس اولڈر پرسن کی فیلنگز, ان کی نیڈس وہ ابھی وہ سمجھ ہی نہیں سکتے جو ان کی اسپیسیفک ہے. تو اس لیے جو بھی کمیونٹی لیول پہ بھی ہم نے ریکمینڈ یہی کرتے ہیں کہ آپ ان کی ریپرزنٹیشن ضرور کریں ان گروپس میں. بھلے ایک انفارچونیٹلی یہ بھی ایک ایشو ہے بہرحال کہ جو بھی این جی او آتی ہے وہ کمیونٹی لیول پہ جب ٹریننگ کے لیے اپنا ماڈیول ڈیولپ کر لیتے ہیں. ہر کوئی اپنا, اتنے سینکڑوں کے حساب سے آپ کو ماڈیول ملیں گے سی بی ڈی آر ایم پہ بھی, کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ پہ. ایک ریکمنڈیشن جو آپ مطلب فار دا گورنمنٹ یا فار این ڈی اے میں whoever is leading this process کہ وہ کوئی کمیونٹی لیول کے اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کر کے کوئی ایک مینول پہ وہ ایگری کر لیں جس میں انکلوژن کا جو ایسپیکٹ ہے وہ اس میں ضرور شامل ہو, اور اس کو پھر جو بھی آرگنائزیشن اس کو لے کے چلتے ہیں وہ کمیونٹی میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہوں. دوسری چیز جو ہے وہ کوآرڈینیشن کا جو ایسپیکٹ ہے ایون ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول بھی ہم نے, اور کیپیسٹی کی بھی ایک ایشو ہے. لاسٹ فلڈ میں ہم نے ایک ڈسٹرکٹ میں ان کو آفر کی کہ ہم آپ کو ڈی واٹرنگ کے لیے پمپس دیتے ہیں, بٹ دین ان کا تھا کہ جی اس کو پیٹرول اور فیول کون اس کا بعد میں ارینج کرے گا. تو اس لیے اس طرح جو پالیسی اور پلان جب بنائے تو اس کو جو نیچے لیول ہے جب اس میں فائنینسنگ کا کہا گیا ہے جیسے فریم ورک میں بھی کہ لوکل لیول وہاں پہ اسٹرینتھن کرے تھرو فائنینشیل اینڈ ریگولیٹری جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کو میرے خیال میں تو ابھی ہمیں ایک زمانے میں ہم این سی سی ہوا کرتی تھی جس میں جو کالج میں اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے ان کی ٹریننگ کرواتے تھے کہ وہ خدا نہ خواستہ کبھی ضرورت پڑے تو وہ دفاع میں شہری دفاع کے لیے یوز کریں گے. لیکن ابھی میرے خیال میں کلائمیٹ چینج کے لیے اس طرح کی کوئی کورس انٹروڈیوس کرنا چاہیے کہ جو ہماری ینگر جنریشن ہے اس کو انوالو کیا جائے, ان کو پریپیئر کیا جائے کہ کلائمیٹ چینج کے لیے جو پریپریشن ہے بٹ responding to any kind of emergency کہ وہ کیسے ایمرجنسی کو رسپانس کر سکتے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ہم نے یعنی جو پی ڈی اے میں ہے این ڈی اے میں ہے ان سے بھی ہم نے کافی کام بھی کیا تھا کہ انکلوژن کو کیسے انشور کیا جائے, اور ایون ایٹ دا ڈی آر آر ناٹ ایٹ دا ریسپانس ان ڈیورنگ دا ریسپانس بٹ ڈیورنگ دا ڈی آر آر. اس کے لیے پھر ہم کمیونٹی میں کام کرتے ہیں, ہم بناتے ہیں اولڈر پیپل ایسوسیشنس, اور ان کو ہم نے لاسٹ جب ان کے پلانز بنائے تھے اپنے کمیونٹی لیول کے اس کو رجسٹر کروایا تھا. رجسٹر ان سینس کے جو ڈسٹرکٹ کا ڈیزاسٹر پلان انہوں نے بنایا تھا ہم نے ان کے ساتھ شیئر کیا تھا, اینڈ دین وی ٹرائی ٹو لنک دوز کمیونٹیز ود دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ so that in case of any emergency or disaster they can work in coordination. اور اسی طرح ڈسٹرکٹ لیول کے جتنے بھی ہمارے پاس ادارے تھے ان کے کانٹیکٹس ہم نے کمیونٹیز کے ساتھ بھی شیئر کیے تھے, اور آئیڈیا یہی تھا کہ یہ آپس میں کوآرڈینیشن سے ان کیس آف فلڈ آتا ہے یا کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہ کیسے رسپانس کر سکتے ہیں. ریسنٹلی جب ہم نے فلڈ میں یہ والا آیا تھا ہم نے لاسٹ ان کی ٹریننگ کروائی تھی یہ ریسکیو 1112 کے تھرو,
تو ہم نے ان سے فیڈ بیک لیا کہ اس جو ٹریننگز تھی اس کا کیا آپ کو فائدہ ہوا تھا. اینڈ ڈیورنگ دیٹ ٹریننگ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے, بٹ اس ٹریننگ میں ہم نے ان کو یہ سکھایا تھا کہ اویلیبل ریسورسز کے اندر آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں, جس میں اگر ایویکویشن میں آپ کرنا ہے, آپ کے پاس بوٹس نہیں ہے, لیکن آپ لوکلی جو ریسورس اویلیبل ہے اس کو کیسے یوز کیجیے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پہ ویڈیوز میں, جیسے ٹائر جو ٹیوب ہوتے ہیں اس کے اوپر چارپائی بنا کے اس کے ذریعے کرتے ہیں. دین دے شیئرڈ کہ ہاں وہ ہمیں کام آیا, ہم نے بہت سارے لوگوں کو اس کے ذریعے ایویکویٹ کیا. ماڈلز ہے لیکن اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی اور اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کا ڈسٹرکٹ لیول اسٹرینتھن ہوگا اور وہ اس کی اونرشپ لے گا اور اپنی کمیونٹیز کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرے گا. سو دس از جسٹ لائک فیو سجیشن فرام مائی سائڈ کہ ہم لوکل لیول کو کیسے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. تھینک یو. Thank you, Moisab. I think that again underscores the importance of strengthening our local communities and also local institutions that are directly working on ground and perhaps have the foremost and first-hand knowledge of both the vulnerabilities and also the responses that need to be catered for. With that discussion and also developing on the same, if I can come to Ahmed Kamal Saab next. And of course, we all are aware that previously you were at the NDMA as the member DRR. So also, if you can wear that hat in addition to the one that you have of FFC, if you can talk about the institutional coordination when we talk about let's assume we're talking about the national level. What is the state of institutional coordination? Also talk us through the approach of the National Flood Protection Plan and how it caters to disaster risk reduction principles. And again, if you could also bring in the discussion of local level institutions and organizations in this mix. So over to you, Ji. And many other things you have heard because you are the real person. जी आप सबका जी बहुत शुक्रिया. और जस्ट फॉरगिव मी अगर मैं मुख्तलिफ रास्तों में चलता जाऊं, लेकिन पहुंचेंगे एक ही जगह पे हम. चीज़ें बहुत सारी होती हैं जहन में. अभी आपने इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज की सबसे पहले या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात की, तो बैक इन 2005 जिस मुल्क में अर्थक्वेक आया तो एट दैट टाइम the need was felt, but इससे हट के 1991 में there was a mission from the UNDP और वो मिशन था UNISDR ने पाकिस्तान में बाकी कंट्रीज में भी भेजा. उसका पर्पस ये था कि 1990 से 2000 के दरमियान का जो पोर्शन है उसको they have declared it as इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. और पर्पस ये था कि उसकी मुनासबत से वो देखा जाए कि मुख्तलिफ जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं या एशिया, अमेरिका और अफ्रीका, बाकी हर जगह के ऊपर इस वक्त डिजास्टर्स बहुत उस वक्त हो रहे थे और ख़ास करके एशिया में सबसे ज़्यादा था. तो देयर वाज अ नीड फेल्ट के the disaster management system should come directly under the top leadership of the country, जो कि administrative leadership हो, constitution ना हो. So that basically transpired into Hugo framework for action in 2005. और उसमें जो major aspect था वो ये था कि there shall be a very cogent, well considered institutional mechanism at the national, provincial as well as the district level to take care of the disaster management issue. और जैसे ये डिस्कस हुआ और हेगो फ्रेमवर्क में इसको बाकायदा लिस्ट किया गया, तो इसमें दोनों अप्रोचेस को कंसीडर किया गया, बोथ टॉप डाउन एज वेल एज बॉटम अप, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस यही था कि हमें कम्युनिटीज को जो कि ग्राउंड के ऊपर है हमने उनको करना है. हम इस्लामाबाद में बैठे इस कमरे में बात कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि इस वक्त सिंध में 2022 के जो हैवक क्रिएट हुआ प्लूवियल फ्लडिंग की वजह से लोग अभी भी वहाँ पे पानी में कितने ऐसे इलाकों में बैठे हों कि जो कि अभी तक हमने उनकी इशू को देखा नहीं है. सो दैट बेसिकली वाज अ पर्पस. और इसीलिए इनको 3 रोल्स दिए गए. नेशनल लेवल के ऊपर उसको स्ट्रेटेजिक रोल दिया गया,
under the Hego framework action provincial level पे कि they will take care of the operational side of disaster management and to implement those with the support of the district disaster management authorities. And by virtue of that 2010 में जैसा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना और फॉलोड बाय द सिमिलर एक्ट पास्ड थ्रू द प्रोविंशियल असेंबलीज और सूबों के अंदर भी बन गए, तो ये सिस्टम एक लिहाज से इन्फोर्स हो गया आ गया। अगर मैं अब आज की बात करूं, हमने तकरीबन 13-14 साल का सफर तय किया। इसमें आई वुड लाइक टू whatever common things or whatever मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं उस पर बात करूंगा, किताब के अंदर लिखे हुए पे मैं बात नहीं करूंगा। और मैं चाहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपने भी जो एक अपने पेपर का जो एक कॉन्सेप्ट का सहायता किया है, उसमें अगर कोई चीज़ आप समझते हैं इससे कोई चीज़ उसमें ऐड हो सकती है तो काइंडली ज़रूर करें। रीज़न उसका ये है कि इट शुड बी ऑल, ये सारे एक वाइडर कम्युनिटी के यूज़ के लिए होना चाहिए। और व्हेन आई टॉक द वाइडर कम्युनिटी इट मीन्स खास करके पब्लिक सेक्टर के लिए, क्योंकि आप इस वक्त पब्लिक सेक्टर से हट के बात कर रहे हैं और आपकी चीज़ों की बाई इन जो है वो पब्लिक सेक्टर को उसी वक्त होगी जब कोई चीज़ थोड़ी सी उनके दिल के करीब भी होगी या जिसमें कि आप कुछ कमियां या कोताहियां उनको इंडिकेट करेंगे। हमारे पास जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत एनडीएमए तो एग्जिस्ट कर रहा है। एनडीएमए ने अपना एक मेजर रोल 2010 के फ्लड में दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम वी फाउंड दैट कि 2016-17 तक DRR वाज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट और DRR में बहुत सारी चीजें ग्राउंड पे आई। इसमें सो मच सो कि हमने नेशनल डिजास्टर रिस्क इंश्योरेंस फ्रेमवर्क तक भी हमने किया कवर, और फिर हमने गाइडलाइंस तैयार की इसके ऊपर फायर सेफ्टी की कि हमारे जो मेजर बिल्डिंग्स के अंदर आग लग जाती तो उसके बाद हमें पेनल्टी क्लॉज लगानी चाहिए, राइट फ्रॉम कि हमने मटेरियल कहाँ से उठाया और उस मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या थी और बनाने वाले कौन थे, पास करने वाले कौन थे, ये हमने बना लिए। बट वेयर इज द इम्प्लीमेंटेशन फॉर दैट? ठीक है जी। सिमिलरली अब जिस वक्त कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, सूबे अपने पॉलिटिकल हेड जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है उसकी इमा पे उसकी हुक्म के ऊपर चलते हैं। फेडरल लेवल के ऊपर वी आर प्रेजेंटली लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर। ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ एनी डिजास्टर इज देयर एनी लिंक फ्रॉम एनडीएमए टू पीडीएमए? ये बात मैंने 2010 से लेके आज तक मैंने की है एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू रिजॉल्व दैट इशू। सिमिलरली सूबे से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम ये कहते हैं कि हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग टीयर जो है वो होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्योंकि उन्होंने तो कम्युनिटी को रीच करना है। वहाँ पे हम इस एडहॉकिज्म की अप्रोच के ऊपर चल रहे हैं। अब एक डीसीओ है या कमिश्नर है, असिस्टेंट, व्हाटएवर जो भी है, जो भी उसको नाम दे दें आप, वो सिर्फ पार्ट टाइमर होता है इस सिचुएशन के अंदर। वो बीच में आता है, थोड़ा सा अपना रोल देता है, उसका इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई शुड बी वेरी ब्लंट एंड आई शुड बी वेरी ऑनेस्ट इन दैट। किसी ने मुझे उठा के लेके जाना तो ले जाए, ठीक है जी। तो मसले के these are those facts जिसकी वजह से हमारे ग्राउंड पे कम्युनिटीज आज भी उसी तरीके से मार खा रही हैं, बल्कि शायद पहले से ज्यादा मार खा रही हैं। अच्छा, फिर हमने एक सिस्टम तो डिवाइस कर दिया कि जी हमारे पास हम एक कंटीजेंसी प्लान तैयार करेंगे। कंटीजेंसी प्लान में इतना फूड, इतना नॉन फूड आइटम होगा, और फिर हम उसको सिनारियोज के ऊपर बिल्ड करते हैं। जब हम सिनारियोज पे बिल्ड करते हैं, कोई डिजास्टर आता है तो उसके अंदर भी इट इज माय पर्सनल, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हमें पॉलिटिकल साइड से बहुत ज्यादा तंग किया जाता है, और उस पॉलिटिकल साइड से आपको टेंट्स की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मुझे अप्रोच करते हैं, और अप्रोच करने के बाद मैं आपको वो टेंट्स भी जारी कर देता हूँ। अच्छा, फिर वी आर मच मोर सप्लाई ड्रिवन रादर देन द डिमांड ड्रिवन। मैं एग्जांपल दूंगा, फॉरगिव मी, मैं किसी के दिल को खराब करने की बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो दिल में मेरे है मुझे बताने की जरूरत है। इसलिए बताने की जरूरत है कि नो आई हैव, मतलब मैं अगर अभी भी झूठ बोलता रहूं तो फिर मेरा ख्याल है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा खराबी होनी चाहिए। वो ये कि लुक एट द कोविड-19 में हमने
एक हमारे फेडरल गवर्नमेंट के इदारे ने, मैं एनडीएमए की बात करता हूँ, एनडीएमए ने उसमें एक सप्लाई के इदारे का काम किया एंड नथिंग एल्स. दैट वाज द रीजन के व्हेन वी फाउंड दैट कि ये वो काम नहीं कर पा रहे, तो फिर हमने एनसीओसी को कायम किया. Why? In order to have a broader कह लीजिए कि participation of all these stakeholders, हमने उस वक्त इस चीज को रियलाइज किया. उस वक्त ये चीज रियलाइज हुई कि ये वाली बॉडी जो है इसके अंदर ये खामियां हैं. इट इज बीइंग रन बाय द जर्नलिस्ट, इट इज नॉट बीइंग रन बाय जिनको के समझ है फील्ड की, या जो के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं जिनको इसके मुताबिक करना चाहिए. द सेम थिंग वाज रिपीटेड इन 2022 जबकि NFRCC का क्या अमल में आया, नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेल का. पर्पस क्या था उसका? ये वजह था कि वी फेल्ड एट द फेडरल लेवल in putting in the required coordination from federal to the provincial and from provincial to the last year. अगर मैं इसमें फर्दर चीजों को कुछ ऐड करना चाहूँ तो वो ये है कि क्या हमने आज तक अपनी जो भी फंडिंग को यूज किया, हम कहते हैं कि हमारे पास 3 phases हैं, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर. We are talking and we are sitting at the moment talking on the pre-disaster issue. और ये pre-disaster के ऊपर ही हमारी basically DRR पॉलिसी रिवॉल्व राउंड करती रही, और हमने उस पॉलिसी के अंदर ये लिखा probably 1% या 2% of the PSDP के जो ओवरऑल फंड्स होंगे वो हम डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ईयर राउंड उसको हम मुख्तस करेंगे. क्या हमने उसके पर अमल किया? अब मुझे तो नहीं पता कि हमने अमल किया. अच्छा, उसके बाद फिर हमने अपने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड्स फेडरल लेवल पे किए, सिमिलरली सूबे ने कर लिए. अब वो फंड्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, वो फंड्स हम यूज कर रहे हैं फॉर रिलीफ पर्पस. मैं जाता हूँ ग्राउंड में, मैं देखता हूँ कि फलानी जगह के पर 310 बंदे जो हैं वो में इम्पैक्ट हुए हैं, और उनमें से 17 बंदे ऐसे हैं, 17 घराने ऐसे हैं जिनके ब्रेड अर्नर्स में उनकी डेथ हो गई है. मैं अपने उस फंड में से पैसे निकालता हूँ, मैं चेक साइन करता हूँ, मैं एक तकरीब करता हूँ, उस तकरीब के अंदर जाके मैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ. इज दैट इज DRR वी आर डूइंग? This is not the DRR, it is the personal publicity that we are undertaking. So the crux of the matter is कि हमें पैराडाइम शिफ्ट के लिए अगर पब्लिक सेक्टर में इसके ऊपर काम नहीं होता तो हमें कम से कम इनिशिएटिव लेना चाहिए फ्रॉम द नॉन पब्लिक सेक्टर, जैसे आप हैं, जैसे कोई NGOs है, INGOs है, CBOs हैं, प्राइवेट सेक्टर है, कोई भी हो गया. मैं इसमें 2-3 चीजें आपको और भी चाहता हूँ कि मैं शेयर करूं. हम बड़ी बेहतरीन किस्म की प्लानिंग करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जीरो है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और इसलिए टाइम एंड अगेन किसी एक इदारे को अगर आपने स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स के ऊपर लेके आना है तो आप उसके अंदर परमानेंट फुटिंग्स के ऊपर लोगों को लेके आए. एक ह्यूमन रिसोर्स आ रहा है, कुछ अरसा गुजारता है, वो अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करता है, वो चला जाता है, फिर दूसरा ह्यूमन रिसोर्स उसकी जगह लेता है, वो भी उसी तरीके से करता है. बट जिसके जाने के बाद उसकी यूटिलिटी कहाँ पे चलेगी? क्या उसने अपने इदारे में जाके या किसी और जगह पे जाके वो सपोर्ट दिया उस किस्म की, उसने उस सिस्टम के लिए वो कितना कारआमद था? अच्छा, इसी तरीके से आई वॉज इन NDA में जनरल फारूक टोल्ड मी कि मैं इदारे के लिए कोई रूल्स या इस किस्म के काम करूं, तो आई टोल्ड हिम कि सबसे पहले हमें यहाँ पे एटलीस्ट मेंबर लेवल तक डायरेक्ट और परमानेंट फुटिंग के ऊपर लोगों को लाना चाहिए. सब्जेक्ट्स के ऊपर जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो, एरिया स्पेशलिस्ट हो, उनको लेके आना चाहिए. एक आपका असिस्टेंट डायरेक्टर वहां पे आता है तो उसको पता हो कि मेरा कैरियर पाथ यहाँ से गया और वो मुझे एटलीस्ट मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तक लेके जाएगा. जब वो ये सोचेगा कि मैं मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तक बन सकता हूँ तो दैट मीन्स ए कैरियर ऑफ 18 to 20 years और मोर towards that. और जिस वक्त वो ये होगा तो बाकायदा there will be a sort of a competition within the organization and then there will be a competition outside the organization जिन्होंने उसके अंदर आना और उसका हिस्सा बनना है. इसका दूसरा हिस्सा ये है कि अगर मैं उसी इदारे की लीडरशिप को हर 1.5 साल 2 साल 3 साल के बाद चेंज करता हूँ तो प्रॉब्ली जो लीडरशिप आती है
وہ پچھلی لیڈرشپ کو دیکھتی ہے کہ اس وقت ہمارے جو سامنے جو حالات ہیں اس میں ہمیں اس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے, بٹ اٹ ہیز ناٹ بین ڈن بائی دی پریویس لیڈرشپ, تو وہ سارے ملٹی پلائی بائی زیرو ہو جاتے ہیں. تو وٹ از دی یوٹیلیٹی, دیٹ مینس ہم آج پھر اپنے سیڑھی کے پہلے اسٹیپ کے اوپر ہی کھڑے ہوئے ہیں. مثلا ان سارے, اچھا دین ہماری پاس جو فنڈنگ آتی ہے, کہاں پہ ہم فنڈنگ خرچ کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اس فنڈنگ کو کسی پری ڈیزاسٹر کے اوپر کہاں پہ ہم نے خرچ کیا ہے؟ پوسٹ ڈیزاسٹر کے اوپر ریلیف میں جا رہے ہیں, ٹینٹس ہم بے تحاشا خریدتے ہیں, فوڈ نان فوڈ آئٹمس خرچ کرتے ہیں. وی اسٹل آر ریئیکٹیو, یا کہہ لیجیے کہ ایون ٹریگرڈ اپروچ کے تحت ہم چل رہے ہیں, رادر دین کہ ہم پرو ایکٹیو اپروچ کے تحت چلیں. اور اگر ہم کسی سٹیج پہ پہنچے بھی تھے 2017 تک 16-17 تک, تو نو ہم زیرو سے بھی نیچے اس معاملے میں آ گئے. اب آگے ہمیں اس کے اوپر کیسے چلنا چاہیے؟ میں اس کے بعد وہ پلان کا جو آپ نے کوشچن کیا اس پہ بات کروں گا. دیکھیے اگر ہم نے اس کے اوپر چلنا ہے نا, ہم بار بار ایک چیز کو ذکر کر رہے ہیں, آن انکلوسیو, آل انکلوسیو اینڈ ڈسپلٹی انکلوسیو. ہمیں تمام جو سیکٹرز آف دی سوسائٹی ہیں ان کو کنورج کرنا چاہیے اپنی امبریلا کے نیچے. ہمیں ان کے فنکشنز کے اندر انکلوڈ کیے بغیر ان کو اپنے امبریلا کے نیچے لا کے چلنا ہے. میں پیرلل ایکٹیویٹی کرتا ہوں. اس سال آئی ہیو کم ٹو نو کہ محکمہ موسمیات کے لیے یہ ایک ایڈوائس تھی کہ انہوں نے جو بھی فورکاسٹ تیار کی ہے, وہ فورکاسٹ تیار کرنے کے بعد انہوں نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے شیئر کرنی ہے, اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اس کو اوکے کرے گی, تو اس کے بعد وہ ایشو ہوگا. واٹ ڈز دس مین؟ میں اس ادارے کی جو پاکستان بننے سے لے کے آج تک اپنی ایک کاوش کرتا آ رہا ہے, کیا میں ان کے مینڈیٹ کو لینا چاہ رہا ہوں, یا میرے نزدیک ان کی کمپٹنسی اور یہ ساری چیزیں کوشچن مارک ہے. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو اس سیکٹر میں آنے کے باوجود پیچھے کر دیا, اور بہت سارے لوگوں کو اس سیکٹر سے باہر ہوتے ہوئے اس میں اندر کر دیا. ٹھیک ہے, دیز آر دی ریئلٹیز. میں صرف اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. کائنڈلی یہ والی وہ چیزیں ہونی چاہیے جو آپ کے جو آپ کہہ رہے ہیں نا گیپس اپنے پیپر میں, یا جو ڈاکومنٹ آپ بنا رہے ہیں ان کو ان گیپس کو اس کے اندر لے کے آئیں, اور ان گیپس کو آپ ریلیٹ کریں مے بی فیو گراؤنڈ ریئلٹیز یا ایویڈنس بیسڈ ریسرچ کرنے کے بعد کہ وہاں پہ یہ چیز یوں تھی, وہاں پہ یوں تھی, وہاں پہ یوں تھی. Having seen all these things, ہم نے 2017-18 میں نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان 4 اختیار کیا, جس وقت I came back from NDMA, تو وہ CCI سے ہم اس کو لے کے گئے, وہاں سے اپروو ہوا. So unfortunate کہ till 30th of June 2022, we did not get a single penny for the implementation of that plan. اب میں اس میں ایک اور ریئلٹی کا ذکر کرتا ہوں, وہ یہ کہ لاسٹ 10 years میں ہماری ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی یا پری ڈیزاسٹر کی اسٹرکچرل انٹرونشنز کی زمین پہ کرنے والوں کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ تقریباً 125 بلین روپیز کی تھی. اس کے اگینسٹ 10 سالوں میں وی گاٹ ہارڈلی 20 یا 21 بلین روپیز. اب آپ اس کو ریلیٹ کر لیں کہ 125 آپ کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے, اور اس کے اگینسٹ آپ کو 20 یا 21 بلین ملتے ہیں, تو what sort of a DRR you are going to put on ground in order to take care of the challenges of the future disasters and all that. 2022 کا جس فلڈ آیا, میں یہ ساری چیزیں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں, جسٹ فار گیو می کہ اگر میں تھوڑا سا سبجیکٹ سے آگے پیچھے ہوں, لیکن انہی چیزوں میں سے آپ کو کچھ ڈرا اگر کریں اور اپنے اس کا حصہ بنائیں تو اٹ ول بی ونڈرفل تھنگ ٹو ہیپن. وہ یہ کہ کیا ہم نے اس چیز کو بھی غور کیا کہ ہمارے جو ٹیمپریچر ویریشنز کتنی ہو رہی ہیں. ہمارے ناردرن سائڈ کے اوپر اگر پچھلے سال آج کے دن 30 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر تھا, اور آج وہاں پہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے انفلوز آؤٹ فلوز اور ہماری اوور آل ٹوپوگرافک سچویشن پہ کیا امپیکٹ آ رہے ہیں. 2010 کا فلڈ جو تھا آپ کا نارتھ سے شروع ہوا, اس نے اسپوریڈک قسم کی رین فال اس نے کی کے پی میں, اور ہیوی قسم کا ریور فلو رن آف ہوا
पंजाब में, जबकि हाईएस्ट लेवल की इनंडेशन उसने सिंध में जाके की। ठीक है, अब 2022 पे आए तो 2010 और 2022 में क्या फर्क नजर आया, वो ये था कि देयर वाज सम लोकल फेनोमेनॉस और लोकल प्रेशर्स started developing in province of Punjab and in province of Sindh and province of Balochistan, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली 2016, 17, 18, 19, 20, 21 में हमारे जितने भी मानसून आए वो मानसून आते थे लोकल प्रेशर एरिया सिंध और बलूचिस्तान में, उसको सक करता था, सक करके उसका ट्रैक चेंज करता था। जब उसका ट्रैक चेंज करता था तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैड रिसीविंग अर्बन फ्लडिंग इन कराची, हैदराबाद और सिंध के एरियाज में, या फिर जो सिंध और बलूचिस्तान के जो एडजेसेंट एरियाज हैं वहाँ पे होती थी। इसके ऊपर हमने क्यों नहीं गौर किया, और इसको गौर करने के बाद हमने इसको DRR के एस्पेक्ट कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करके हमने इसके लिए क्यों नहीं अरेंजमेंट्स किए? दैट इज माय क्वेश्चन। ठीक है जी। और अगर हमने 2012 में अपना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर लिया था और उसकी जो भी कॉस्ट थी, प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस वक्त के डॉलर रेट के मुताबिक इट वाज 1.02 बिलियन $, और उसमें तकरीबन 76 या 78% जो था वो अर्ली वार्निंग सिस्टम और फ्लड से रिलेटेड एस्पेक्ट्स के ऊपर था। क्या हमने 2010-12 के उसके ऊपर करके 2021 में पहला और 2022 में दूसरा हमने वेदर रेडार इंस्टॉल किया, पहला हमने इस्लामाबाद में, दूसरा कराची में। अब आपको पता है कि इस इस्लामाबाद के और कराची के वेदर रेडार्स ने आपके DRR एस्पेक्ट और उसको स्ट्रेंथन करने में कितना मेजर रोल अदा किया। रावल जो इस्लामाबाद का रडार लगा है वो पेशावर से लेके अपस्ट्रीम ऑफ मुल्तान तक आपको मीडियम रेंज फोरकास्ट की फैसिलिटी इस वक्त दे रहा है। दैट मीन्स कि वट एवर यहाँ पे सिस्टम आएगा वो आपको बता देगा कि नेक्स्ट 72 से 96 आवर्स में क्या हो सकता है। ठीक है, ये एक वो बेहतरी है जो कि हमने अचीव की। और फिर 2007 से लेके इस साल तक हम सब ने ये देखा है, प्रॉब्ली मैं से ज्यादा आप सब इसको जानते हैं कि देयर हैड बीन a regular and progressive incursion of cyclonic activity towards the coast of Pakistan and Oman. अगर आप फेट यमजियन फेट लेते हैं, then Ashoba है, नीलोफर है, so many other जो उसके बाद आते रहे, और एक जो recent आया। तो इस चीज को देखते हुए फिर 2022 में another weather radar कराची में नस्ब हुआ। वो आपको 100% कोस्ट ऑफ सिंध और तकरीबन 50 to 55% कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान की कवरेज देता है। दैट इज द रीजन कि इस वक्त आपने देखा होगा कि महकमा मौसमियात की जो फोरकास्ट या हैंडलिंग ऑफ दी, वो पता नहीं कौन सा, मैं उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा, ये जो अभी पिछले दिनों जी पेपर जो है इसकी बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग हुई और उस रिपोर्टिंग ने एंड तक आपको बताया और जैसा बताया उसके मुताबिक हुआ वो। ठीक है जी। एंड दैट वाज कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट दी प्री डिजास्टर इंटरवेंशन इज, एंड वंस यू गेट दी प्री डिजास्टर इंटरवेंशन, उसकी वजह से आपका प्रिपेयर्डनेस लेवल कितना साउंड होता है। अब मैं आता हूँ अगेन, जब 2022 का ये फ्लड आया तो उस वक्त द गवर्नमेंट की है, या कह लीजिए कि हम सारे सोए हुए थे, हम जागे, और देन वी केम टू नो दैट कि जी इतने बड़े बड़े प्लान बने हुए हैं, देयर आर नो फाइनेंसिंग अवेलेबल। और जो फाइनेंसिंग अवेलेबल होती है, सॉरी टू से, सबसे पहले मैं उससे अपना कमरा ठीक करता हूँ, फिर मैं अपना कॉन्फ्रेंस रूम ठीक करता हूँ, मैं अपना लैपटॉप और मैं बाकी की चीज़ों को मैं बेहतर बनाता हूँ। नया टेबल कुर्सी मेज बोतल भी नहीं आ जाती और सारी चीज़ें नहीं आ जाती हैं। ठीक है, तो वंस दैट इज डन, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जी अब हमें नए नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान की ज़रूरत है। इसको टू कट शॉर्ट, इस पे वी स्पेंड 10 months, और मैं बहुत ज़्यादा यकीन के साथ आपको बता रहा हूँ कि इसमें हमने जो नई चीज़ें शामिल की, हमने इसको नाम दिया है इंटीग्रेटेड फ्लड रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच का।
और जब हम कहते हैं ना इंटीग्रेटेड फ्लड रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच, दैट मीन्स इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू DRR, इट इज नॉट रिलेटेड टू ड्यूरिंग और पोस्ट डिजास्टर। इसमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को फर्स्ट टाइम हम लेके आए हैं, और उसमें जो जंगलात का शुबा है, जो एग्रीकल्चर का शुबा है, हाउ वेल हम अपनी ज़मीनी जो है हकायक को देखते हुए वहाँ पे स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस अगर ज़रूरी नहीं है तो हम वहीं पे पानी की बेहतर यूटिलिटी के लिए या फ्लैश फ्लड को वहीं पे रोकने के लिए हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। देन वी आर इंट्रोड्यूसिंग मोबाइल रेडार टेक्नोलॉजी। वाई? आप सबके इल्म में है 25, 26, 27 अगस्त 2022 इन 3 दिनों में देयर वाज ए हैवक क्रिएटेड अपस्ट्रीम इन ऑन सवात रिवर एज वेल एज अपस्ट्रीम ऑन रिवर काबुल, जिसकी वजह से जो फ्लो आया वो तारीखी फ्लो था तकरीबन 8 लाख क्यूसेक का, एंड देयर वाज ए वेरी इमिनेंट डेंजर कि आपका या तो तरबेला या आपका चश्मा या आपका तौंसा किसी न किसी जगह से कोई मेजर हलन ना करे सिचुएशन होगी। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए नाउ हमने ये सजेस्ट किया कि इन इलाकों में जहाँ पे लोकल सिस्टम डेवलप होता है और बहुत फास्ट मूव करता है और आनंद फानंद सब कुछ होता है, तो देयर इज ए नीड ऑफ स्मॉल डाया हाई रेजोल्यूशन मोबाइल वेदर रडार्स का, ताकि आप वो व्हीकल माउंटेड है आप उनको उस इलाके में जाके पार्क करें और फौरी तौर पे जिस सिचुएशन डेवलप होगी इसको हम नाउ कास्टिंग कहते हैं। इसलिए अगले 1 घंटे में क्या होगा ताकि लोकल कम्युनिटीज को बचा तो सकें, उनके लाइफ स्टॉक को, मूवेबल प्रॉपर्टीज को तो बचा सकें। दूसरी इसमें चीज जो शामिल हुई है जो कर रहे हैं प्री डिजास्टर या DRR के कॉन्टेक्स्ट में, फर्स्ट एवर बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, आप सबके इल्म में है कि इसमें सिर्फ एक फोरकास्टिंग डिवीजन है जिसको FFD लाहौर में महकमा मौसम में आता है जी। नाउ देयर इज गोइंग टू बी 5 मोर, 1 ईच इन सिंध, Balochistan, KP, GB as well as in AJK। अब ये हर जगह पे लग गए। इसके साथ साथ लास्ट मंथ वी हैड गॉट अवर फर्स्ट एवर नेशनल फ्लड टेलीमेट्री मास्टर प्लान, जिसके तहत 707 टेलीमेट्री स्टेशंस हमने लगाने हैं। मेन रिवर सिस्टम पे नहीं लगाने, मेन रिवर देखें आप पाकिस्तान, यहाँ रिवर सिस्टम हमारा एक दरख्त की तरह है, ये 5 दरिया हैं तो अल्टीमेटली ये अरेबियन सी में जा रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन इस दरिया के ऊपर शाखें हैं, फिर उसके अंदर और शाखें हैं, फिर और शाखें हैं, ठीक है। तो दरिया, तो जितनी छोटी से छोटी शाख है उसके ऊपर हमें टेलीमीटर सिस्टम लगा देना है ताकि हर शाख में आपको पता चले कि पानी कितना प्रोड्यूस हुआ, वो आगे कितना कंट्रीब्यूट करेगा, आगे कितना कंट्रीब्यूट करेगा। बेस्ड ऑन दैट आपके पास उस रीजन में, लेट से हम बात करते हैं KP की या GB की, तो GB का जो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन होगा वो एक्सक्लूसिवली उस एरिया को देख सकेगा कि यहाँ पे क्या होना है। अच्छा, फिर उस सारे 6 के 6 को हमने सेंट्रल निज़ाम के तहत इस्लामाबाद में NDMA में भी हम करेंगे, FFC में करेंगे, लाहौर में महकमा, लाहौर में वापडा में, और महकमा मौसम तो इवन इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के साथ वो टाइट अप होगा, ताकि इस वक्त आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, यू आर सिटिंग ऑन ए डिसीजन मेकिंग सीट, ठीक है जी। आप देख रहे हैं आपके पास स्क्रीन पे सामने बलूचिस्तान की कैफियत आ रही है, GB की कैफियत आ रही है, लेकिन जब आपको बस बलूचिस्तान की कैफियत आ रही है तो बलूचिस्तान उधर बैठ के देख भी रहा है। जो डेटा आपके पास बलूचिस्तान का इस वक्त आ रहा है वो बलूचिस्तान को भी पता है कि यही डेटा है, तो दैट मीन्स कि वहां से आपकी डेटा ऑथेंटिसिटी का इशू जो है, आप कहते हैं कि जी ये वाला डेटा ठीक नहीं है और आप कहते हैं ये वाला ठीक है, तो वो वहां पे किल हो जाएगा। एंड देयर विल बी उस सेंट्रल निज़ाम में आप बैठ के अपने इलाके के साथ साथ पूरे कंट्री में क्या हो रहा है वो भी देख सकेंगे। फिर चारों के 6 के 6 रीजन्स में वो GBDMA, SBDMA, PDMA के साथ कनेक्टेड होंगे, वापडा के साथ कनेक्टेड होंगे, सेंटर में वो FFC, NDMA, PMD इस्लामाबाद, इरसा के साथ वो कनेक्टेड होंगे। बाय वर्च्यू ऑफ दैट आपकी जो रिस्पॉन्स है उसको मिनिमम होना चाहिए। अब रीजन उसकी ये है कि आपने प्री डिजास्टर को या DRR को इस सारी चीजों से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है। लेट मी ऐड टू फर्दर टू दैट, जापानीज गवर्नमेंट ऑफर्ड के
वो इस वक्त जो हमारे एम्बैंकमेंट्स हैं और जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है पाकिस्तान में, उसको वो अपने टेक्नोलॉजी के जरिए असेस करके बताना चाहती है कि हमारे ग्रे एरियाज कौन से हैं और उसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं. सो नाउ जापानीज गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ए प्रोजेक्ट थ्रू विच जितने हमारे एम्बैंकमेंट्स हैं दरियाओं के गिर्द, उनका बाकायदा वो एक रिस्क असेसमेंट भी करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ की असेसमेंट भी करेंगे, एंड देन दे आर गोइंग टू सजेस्ट मे बी ए न्यू मिक्स ऑफ कह लीजिए कि मटेरियल, कि इस मटेरियल के जरिए आप इसको तैयार करें और न्यू मिक्स ऑफ अदर टेक्नोलॉजी. लास्ट ईयर जिस वक्त ये सिचुएशन हुई सखर और कोटरी के दरमियान में, आप सब जानते हैं कि वहां पे पानी 8 महीने तक यूं होता रहा. उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि मैं चाहता हूं कि काइंडली उसको कॉन्सेप्चुलाइज कीजिए. सिंध से कोटरी की तरफ हम जा रहे हैं और यहाँ पे एफपी बंद है जिसको फ्लड प्रोटेक्शन बंद कहते हैं, और ये एफपी बंद वो है जो कि बलूचिस्तान के कीर्थर के इलाके से पानी आता है, उस पानी को मेन इंडस रिवर में जाने से रोकता है. ठीक है जी. यहाँ पे ऊपर हमल लेक है और इधर नीचे मंचर लेक है. इस दफा यही हुआ है कि हमल लेक से ऊपर बलूचिस्तान में और फिर हमल लेक और मंचर लेक के दरमियान बलूचिस्तान में कीर्थर से तकरीबन 9 से 12 मेजर हिल टॉरेंट्स ने इतना हैविक क्रिएट किया कि वो पानी आया, उसने एफपी बंद को ओवरटॉप किया. ओवरटॉप करने के बाद जिस वक्त इंटरनल सिस्टम जिसकी कैपेसिटी नहीं थी उसको उसने इनंडेट करता गया, तो हमने इधर भी कट लगाया, फिर इधर कट लगाया, फिर इधर लगाया, इधर लगाया. We had made 6,277 cuts उस पूरे पोर्शन के अंदर, और जिसकी वजह से सिटीज को भी हमने इनंडेट किया. अब इसका सोल्यूशन की बात करते हैं. When it came to solution, then we suggested कि अब इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि आप जो कीर्थर से हिल टॉरेंट्स मेजर आ रहे हैं आप उसको फ्लड चैनल में कन्वर्ट करें. जो आपका फ्लड प्रोटेक्शन बंद जिसको मैं एफपी बंद कहते हैं, उसके साथ साथ उसके बाहर एक छोटी चैनल बना दें ताकि वो पानी आए और सीधे चैनल में जाए. इधर हमर लेक की कैपेसिटी को बढ़ाएं और उसके अंदर आप टेलीमीटर्स लगा दें. उसके पानी के लेवल इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया. ठीक है. और नीचे इसी तरीके से आप मंचर लेक में, मंचर लेक अल्टीमेटली पानी रिलीज करती है इंडस के अंदर, और उसके रिलीज के 2 पॉइंट्स हैं, एक अरल हेड और एक टेल हेड. उन दोनों की कैपेसिटी मिल के 20,000 क्यूसेक बनती है. नाउ वी हैव सजेस्टेड कि इसकी कैपेसिटी को 20,000 से बढ़ा के आप 1 लाख तक ले जाएं, और इसी तरीके से जो आपके मंचर लेके उसको आप थोड़ा सा रेज करें और उसके ऊपर भी आप मीटरिंग कर दें या टेलीमीटरिंग कर दें, ताकि डेंजर लेवल के जरिए आपको पता चल जाए कि द सिचुएशन इज लाइक दैट. सिमिलरली अंदर के आप में से अक्सर इतने सुना होगा व्हाट इज एलबीओडी एंड व्हाट इज आरबीओडी, लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन और राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन. फलाना ये क्या चीज थी? ये था कि जो एफ्लुएंट ड्रेनेज एफ्लुएंट आता है उसको इन एलबीओडी और आरबीओडी के जरिए हम इंडस में फेंक दें, मेन सिस्टम को खराब किए बगैर. जिससे इसको डिजाइन किया गया उस वक्त हमने बड़ी ह्यू एंड क्राई की कि इसको आप खाली ड्रेनेज इफ्लुएंट के ऊपर डिजाइन ना करें. ड्रेनेज इफ्लुएंट से मुराद है कि 3,000 4,000 क्यूसेक के ऊपर. मानसून में इसके ऊपर जब पानी आएगा तो ये बेकार हो जाएगा. इस मानसून में जो 3,000 क्यूसेक का था उस पर 40,000 क्यूसेक पानी आया, तो आपको किधर नजर आएगा वो एलबीओडी और आरबीओडी. सो नाउ देयर इज अ डायर नीड टू रीबिल्ड दैट, टू मॉडर्नाइज दैट एंड देन टू कनेक्ट इट विद जो कि आगे चेंजेस होने जा रही हैं. ठीक है. ये स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स ग्राउंड की हैं फुलफिल करने के लिए. अच्छा, फिर मैं आपको इसमें बताऊं कि इसमें मेजर जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि ये सारा पानी आप बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे. सिमिलरली कोहे सुलेमान जो सदर्न पंजाब में है, वहां से वो वाले हिल टॉरेंट्स जो 20,000 22,000 25,000 पानी क्यूसेक का पानी जनरेट करते थे, उन्होंने 1.75 2.50 लाख तक का पानी उन्होंने जनरेट किया. अब वो पानी तो उन्होंने जनरेट कर दिया, लेकिन आगे वो या तो वो फीड होगा स्ट्रेट अवे आपको तौनसा से नीचे फ्लडिंग करेगा. तो अगर आपने उसको बेनिफिशियल यूज में लाना है तो व्हाई शुड नॉट
that be routed through certain flood channels and that water be made available to the communities living on both sides of that, ताकि उनकी livelihood भी क्या है खराब ना हो, वो उसी एरिया में रह के अपनी जिंदगी गुजारें. और we being the agrarian agriculture based country तो हमें इस चीज की जरूरत भी है. अच्छा, अब आखिर में मैं ये बात करूंगा कि देखें very good things are there, some good financing options are also there. Asian Development Bank, Government of Japan, Government of China, Asian Infrastructure Development Bank or Islamic Development Bank, it has come in a big way with a possibility of about $800 million और जो कुछ मैंने आपसे बात की है इसको करने के लिए. तो जब हम ये सारा कुछ करने के लिए जा रहे हैं, ये इसको कौन करेगा जी? हम आप करेंगे ना. तो हम आप इसी हालत में कर लेंगे? No, we need to have our capacities enhanced also. We need to have a new, well-educated human resource injected into the system, ताकि जो human resources है जो हमारे जैसे बूढ़े बैठे हुए हैं वहां पे, वो उनको ट्रेडिशनल चीजों से हटा के नई चीजें अप्रोचेस को लेके आए और लाने के बाद ज्यादा बेहतर पेडेस्टल के ऊपर चीजों को लेके चलें, so that in the event of any consequence on ground हम हमारी रिस्पांस क्विक हो, हमारी रिस्पांस के ऊपर जो खर्चा जो सारा है वो कम से कम हो. माजरत के साथ आखिरी बात, किसी ने इसको माइंड नहीं करना, कोई यहाँ पे बैठा भी नहीं ऐसा जो माइंड करेगा. मैं इसका बहुत बड़ा मुखालिफ हूँ, लेकिन मुझे इस तरीके से प्रोजेक्ट ना किया जाए बाहर. आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं. हम अपने सिस्टम में हमारा जो सिविलियन जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमें उस सिविलियन ह्यूमन रिसोर्स को सिस्टम में बिठा के उस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है. ना ये कि जिस इमरजेंसी आ गई तो उसके अंदर हम फिर अपने आर्म फोर्सेस को उन सारों को वो आते हैं एंड देन हम बैक बेंचर्स होते हैं, देन दे सिट ऑन द ड्राइविंग सीट और वो लेके जाते हैं एंड द सिचुएशन रिमेन्स देयर. वो सिचुएशन से निकल जाती है, वो पीछे वाले बंदे फिर आके बैठ जाते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं. तो ये इस चीज को सीरियसली देखें, इसका हिस्सा बनाएं इसका. ठीक है जी, किस तरीके से बनाएंगे यू नो बेटर. देयर आर सो मेनी इश्यूज में जिससे बात कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे पता है कि बाकी दोस्तों ने भी अपना कोई इनपुट देना होगा. तो माय अपॉलॉजीज कि अगर कोई चीज़ मैं ज़्यादा कह गया, लेकिन दिस इज व्हाट विच यू नो आई गिव फ्रॉम माय हार्ट. और अब मेरे पास देने के लिए कुछ और नहीं, मैं समझता हूँ कि शुक्रिया अहमद कमाल साहब को. चूंकि मैं जानता हूँ कि हमने इकट्ठे बहुत काम किया इस फील्ड में, पॉलिसी लेवल पे भी, और ये जो अभी जिक्र कर रहे थे, और हमने वो टाइम भी देखा है जब जिनका जिक्र ये करें कि हाउ सिविलियन लीडरशिप ड्रोव इट, एनडीएमए को कैसे चलाया गया, कैसे वो ये भी उस रोल में, तो सिविलियन भी लोग रहे हैं. इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि कौन क्या है, असल अप्रोच की बात होती है. वाई सिविलियन का मतलब है कि सस्टेनेबिलिटी टू द सिस्टम. सिस्टम इसलिए रन नहीं करते कि जब एडॉक पे चल रहे होते हैं, जब किसी को पता हो कि मैं किसी एक पोस्टिंग से दूसरी पोस्टिंग पे आया तो वो प्रॉब्लम होता है. और जो एक और बात जो जब इंस्टीट्यूशन की कर रहे थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो वीकनेस हमारे सिस्टम में है वो यही है कि कैरियर पाथ नहीं बनता. अब ये देखें कि डिजास्टर नॉट फॉर 6 months. अब ये सोच क्या थी कि जी सारी INGOs को इन्होंने कहा जी कि आप चले जाएं, जब हमें जरूरत होगी आपको 6 महीने के लिए बुला लेंगे. ये मामूली बात नहीं. इसमें मैंने लिखा है, रूट लेग ने अपने बुक छापी, उसमें मेरा ये चैप्टर है कि मिसकंसेप्शन ऑफ सिविल सोसाइटी इन पाकिस्तान. वहां मैंने यही बात की है कि भाई वो एक आपको पता 2010 का सलमान ने अपने पेपर में भी जिक्र किया है कि 2010 और इस वक्त 22 के फ्लड में रिस्पांस क्यों वीक रहा, या आपने जिक्र किया कि ज्यादातर लोकल लेड था लेकिन वो टेक्निकली वीक था और 2010 के मुकाबले में, क्योंकि उस वक्त टेक्निकल एक्सपर्टीज इतनी थी, हम सब लोग इकट्ठे उस वक्त समझने वाले थे, और INGOs के पास ट्रेंड स्टाफ होता है, पूरी दुनिया में इमरजेंसी हैंडल कर रहे होते हैं. ज़ाहिर है मैंने भी एशिया की तकरीबन 12 इमरजेंसी में, बिकॉज ऑफ माई इंटरनेशनल रोल, मैं 12 इमरजेंसी हैंडल कर चुका हूँ एशिया में, फिर पाकिस्तान में आके भी काम करते रहे. तो इशू ये था कि इन्होंने कहा जी 6 महीने के लिए आपको हम बुला लेंगे. 6 महीने का मसला नहीं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जब यहाँ आती है, जब वो फेज आउट करके जाती है, उसके कंटीजेंसी स्टॉक्स होते हैं, बहुत सारी उनके चीजें होती हैं, स्टाफ होता है,
फिर डोनर के साथ कमिटमेंट होती है, उसको वाइंड अप करना, एकदम आना, ये कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं होता है। ये हमारी अप्रोच थी, और ये अप्रोच उन्हीं लोगों की थी जो बैकग्राउंड पे बैठ के समझते थे एनजीओ या आईएनजीओ कोई गैर मुल्की एजेंडे पे काम करते हैं। अब उन्हें रियलाइज हुआ, अब जब ये सिचुएशन आई तो 6 महीने के लिए कोई नहीं आता होता। जो लोग यहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान में मुश्किल है, उन्होंने अपना जाना थोड़ा डिले कर दिया। जैसे ऑक्सीजन इनका फेज आउट था, इन्होंने कहा नहीं अभी चूंकि पाकिस्तान को जरूरत है, और ऑर्गेनाइजेशन थी, हेल्प एज है, बाकी जितने दोस्त यहाँ मौजूद थे इन्होंने बाकियों से भी रिसोर्सेज लेके अपनी जो बनती थी ना कुआं, उस कुआं से ज्यादा इन्होंने रिस्पॉन्स में काम किया। तो लॉस किसका हुआ? सिस्टम में जब तक आप मुल्क देखें, डिजास्टर जो है, जब हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज कोई जाने वाली चीज नहीं है, और ये डिजास्टर अब हमें प्रूवन है कि ये सिर्फ कोई बारिश नहीं आ रही, पूरा एक सिस्टम है जो इस वक्त चेंज ला रहा है, जो क्लाइमेट चेंज है जिसको हम कहते हैं, उसकी हम नजरी तौर पे जब उसको देखते हैं वो हमें लगता है फ्लड की सूरत में, ड्राउट की सूरत में, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, ये सारा क्लाइमेट चेंज और इसने चलना है। पाकिस्तान वल्नरेबल कंट्री, तो हमें इस सिस्टम को एडहॉकिज्म से निकालना है। द मोमेंट वी विल कम इन ए रियल मोड, और हमें कोई एक्शन में आएंगे और हम डिसाइड करेंगे अगले 10-15 साल में हमारा क्या प्लान है, उस वक्त तक ये बात नहीं बनेगी। अभी भी अगर हम एडहॉक पे देखते रहेंगे कि जी डिजास्टर जब आएगा देख लेंगे, वो जो आपने कहा डीसी का, डीडीएम में क्या है, एक डीसी अपना काम कर रहा है, जब फ्लड आता है वो कहता है अच्छा जी ये कर दो वो कर दो, बट डीडीएम में का जो स्ट्रक्चर, हमने दुनिया के बाकी एशिया में, मैंने जैसे अर्ज की के बाकी दोस्तों ने भी काम किया जो इमरजेंसीज में जाते हैं। आप ये देखें कि मैंने एक यूनियन काउंसिल लेवल पे फिलीपीन में जब हयान के बाद मैं वहां था, तो जब मैं गया हूँ फ्लड से यानी जब आई है वेव, उसके बाद गए तो जो सर्वाइवर की तादाद बहुत ज्यादा थी। तो मैंने एक 80 साल खातून से इंटरव्यू किया कि वो सर्वाइव कैसे कर गई, 4 साल का बच्चा कैसे सर्वाइव कर गया टाइड से। उन्होंने खैर अपना बताया, बिकॉज दे वर प्रिपेयर्ड, उनको प्रिपरेशन की ट्रेनिंग्स थी, उनको DRR उनके प्रॉपर थे, और यहाँ तक कि उनके ये उनके उसमें शामिल है कि आपने किस लेवल पे अपना स्कूल का बैग टांगना है स्कूल से वापस, क्योंकि वहां तो साल में हजारों साइक्लोन्स आते हैं। तो दे आर ट्रेन्ड फॉर इट, बट वी आर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट, सॉरी फॉर इट। जो ये अहमद कमाल साहब बात कर रहे थे, ये कोई वो जज्बाती बात नहीं कर रहे थे, ये सिस्टम में रहने के बाद इनको ये फील होता है कि सिस्टम अभी उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। देखिए हाँ वही, अभी हमें ये सोचना है कि सिस्टम को रिस्पॉन्ड कैसे कराना है, इसलिए जो ना ये जितने जल्दी मुमकिन हो जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप जी जी प्लीज और बात करूं, देखिए पहले NHN ये PHF और ये सारे बड़े रोल देते थे, वाइब्रेंट थे, काम करते थे, हम इनको एक अम्ब्रेला के नीचे बिठाते थे। 2010 के बाद जनरल नदीम व्हेन ही वाज इन NDA में, तो उन्होंने SPU कायम किया था, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट, और उस SPU में देयर वाज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ सोसाइटी, सारे उसमें आते थे, ठीक है जी। अब वो हमें नजर नहीं आती चीज, वो क्यों, क्या हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी चीज ये कि ये तो शुबा वो है इसमें, अनलेस एंड अनटिल यू आर लाइक दैट। अगर आपने माशाल्लाह बात की मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके चीजों को देखने की, तो जापान का जो डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है वो ट्रायंगल अप्रोच देता है। पहले कहता है कि जो अगर लेट्स से कि मैं किसी क्लाइमेट के अंदर, किसी डिजास्टर के अंदर मैं फंस गया, तो पहले मैं अपने आप को बचाऊं। जब मैंने बचा लिया तो उसके बाद अगर मुझे कोई करीब नजर आता है तो फिर मैं उसका हाथ पकड़ूं, फिर हम दोनों मिल जाए तो फिर तीसरे का हाथ पकड़े। इस तरीके से वो आपका नेट बनता चला जाता है। जापान में स्कूलों में सिटी में किस तरीके से डिजास्टर को मैनेज करना है, सो मेनी गुड थिंग्स। आपके इस पेपर में जो आपने किया, आई एम सॉरी अगर मेरे से ओवरलुक हुआ, इसमें एकेडमिया के रोल को बहुत ज्यादा जी हाँ, मीडिया के रोल को डाले, अवेयरनेस के रोल को डाले। अच्छा जैसे एकेडमिया के रोल को डाले ना, तो उसमें अच्छा फिर हमने NIDM का जिक्र किया, वेयर इज NIDM? अब चले हमने मैं शेयर करता हूँ कि 2010 के फ्लड के बाद हमने NIDM के लिए बाकायदा एक प्रपोजल तैयार किया था, जिसमें हमने कहा था कि बाय दिस टाइम इतने TOTs होंगे, इतने फलाने होंगे, और फिर उनके लिए हमने फॉरेन ट्रेनिंग और सारा कुछ करके प्रोग्राम बना के गवर्नमेंट को दिया था। बट इट वाज मैनेजमेंट आई और उसको बंद करके ना, तो हमने न्यू रख दिया, ठीक है। अब
हमने फिर शॉर्ट कोर्सेज शुरू किए, क्या जी, फ्लड रिस्क असेसमेंट, क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट, अर्थक्वेक रिस्क असेसमेंट. यार आप कब तक चलाएंगे, कब तक किन लोगों को लाके वो करेंगे? Why you do not bring innovation in that? अब मुझे पता चला है कि देखिए बुरी चीज नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे हम मजीद परे हट जाएंगे कि now that is being run by probably some wing commander or like that, आर्मी एयरफोर्स से रिलेटेड है, और फिर वो सारा सेटअप वैसा है, और हम ये कहते हैं कि जी हम इनको फीमा के साथ और उसके साथ, तो भाई साहब करें, उनके साथ जरूर करें, पहले अपनी आप कम्युनिटी लेवल पे जाके उनको तो देखें वहाँ पे क्या जरूरतें हैं और उसको हमने किस तरीके के साथ हैंडल करना है. और जब तक कि आप उस फोरम पे हर मकतब फिक्र के बंदे और ह्यूमन बीइंग को ला के उसके जरिए उस चीज को फैलाएंगे नहीं, तो आपको उसको साइंटिफिक बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है. ये इट शुड बी, इसको सदाबहार होने की जरूरत है कि जो हर मौसम में चले और इतना स्ट्रांग हो कि इसमें तमाम एक्सपर्ट्स और सारे लोग मौजूद हों. ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की बात की थी, उसमें CBDR में कितना अच्छा मॉडल आया था, उसमें NIDM का कितना अच्छा मॉडल आया था, अर्ली वार्निंग सिस्टम का कितना, क्या हमने उसको इम्प्लीमेंट किया ग्राउंड के? जी जी जी. पाकिस्तान में अगर पॉलिसीज की बात करें तो पॉलिसीज शायद किसी मुल्क के पास इतनी पॉलिसीज गाइडलाइंस नहीं है, शायद ओवर लेजिस्लेशन हुई है, और इस हद तक हुई है कि उनके दरमियान रब्त भी कोई नहीं है, और जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम प्रॉब्लम का शिकार होते हैं कि किसने इम्प्लीमेंट करना है, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन के साथ रिसोर्सेज जुड़े हुए हैं. वो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? मुझे याद पड़ता है NDMP जिस वक्त बना था 2012 में, तो इसका एक रोड मैप बना था बड़ा अच्छा, जिसमें बहुत सारे पॉइंट थे कि 2022 तक हमने क्या करना है, रिसोर्सेज उसके साथ थे, HVCA की बात उसमें थी, और बड़ा सिस्टमेटिकली MHPRA की बात थी एग्जैक्टली. तो वो सारा वो रोड मैप कहाँ गया, उसमें कुछ एफर्ट हुई भी, लेकिन वो सारा कोई ट्रैक, वो स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम था, 1 बिलियन वो सेफ सिटी और उसका UNDRR का प्रोग्राम था, वो बहुत अच्छा. फिर हम बात करते हैं, अगर इमरजेंसी की हम बात करते हैं तो इंटरेस्टिंगली आज भी 1958 का क्लैमिटीज एक्ट हम इसलिए उठा के बैठे हुए हैं कि उसमें इमरजेंसी की डेफिनेशन उस वाहिद डॉक्यूमेंट के अंदर है, हालांकि ना रेलेवेंस खत्म हो चुकी है उस डॉक्यूमेंट की, वो बना था उस पाकिस्तान के लिए. 1958 के क्लैमिटीज एक्ट में इमरजेंसी की डेफिनेशन मिलती है और आज तक हम वही लेके चल रहे हैं. देन अगर हम बात करते हैं मुख्तलिफ क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2021 की है, 2013 की है, DRR पॉलिसी, दोनों में नेक्सस क्या है, लिंक क्या है, कंप्लीटली मिसिंग. समटाइम्स हम DRR को निकाल के NDMA को निकाल के डाल देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट डाल देते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नीचे, कभी इसे हम बिल्कुल उल्ट कर देते हैं, कभी निकालते हैं हम क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के नीचे डाल देते हैं. सो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स आर देयर, बट उसे कैसे हमने इस वक्त के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक अप्रोप्रिएट करना है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. देन एक और चीज थी कि हमारी जितनी पॉलिसीज बनी है कॉलोनियल माइंडसेट के साथ बनी हुई है मोस्टली. ऑक्सफैम में हम एक वर्ड यूज करते हैं कॉलोनियल माइंडसेट, मींस के टॉप डाउन. तो जब तक हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को डी कॉलोनियल अप्रोच के लेंस से नहीं देखेंगे तो शायद इंस्ट्रूमेंटल चीजें ना हो सकें जैसा हम चाहते हैं. एक और चीज इसमें कि अभी सर ने बात की, 2010 में 128 INGOs थी पाकिस्तान में, जिनमें से तकरीबन 70 के पास रिसोर्स थे जिन्होंने रिस्पॉन्स किया था. अब की बात करें तो हमारे पास टोटल 68 रह गई थी, जिनमें से रिस्पॉन्स कितनों ने किया, 35 या 40. 35 का ग्रुप है शायद PHF में जो है, ठीक है. तो पुराने लोगों को पता होगा, मोइज भाई उनमें आते थे मीटिंग में, वाइब्रेंट लोग थे जो बात करते थे पॉलिसी मेकिंग पे, चीजों पे. इस वक्त जितनी हमारे फोरम्स हैं वो कहीं ना कहीं आइसोलेशन का शिकार हो गए हैं, एंड जो डिस्कशन है इट्स मोर ऑफ रिसोर्सेज के, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कोलैबोरेशन कहाँ होगी, कंसोर्शियम कैसे बनाने हैं. एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सारे का सारा काम हम किस लिए करते हैं. सेंडाई फ्रेमवर्क की हमने बात की. सेंडाई फ्रेमवर्क जिन लोगों ने ह्यूगो पे काम किया है वो कहते हैं कि ह्यूगो
was a much better document, guiding document than Sendai. जो कि Sendai में 4 priorities हैं, इसमें मुख्तलिफ लेवल्स हैं कि जी इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा, नेशनल पे क्या होगा, रीजनल पे क्या होगा, लोकल पे क्या होगा. अगेन मसला ये है कि DRR पॉलिसी भी हमारी थी, तो उसको हमने उसे रन करने के रूल ऑफ बिजनेस बनाने थे या उसकी कोई गाइडलाइन बना दी इम्प्लीमेंटेशन, वो तो एक ब्रॉडर गाइडलाइंस है. फिर 18th अमेंडमेंट भी हो गई. उसके बाद क्या नेशनल लेवल और प्रोविंशियल लेवल में इनमें कोई लिंक है, वो आज तक समझ नहीं आ रहा. तो ये एक बहुत कम्प्लेक्स निज़ाम है जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, या ह्यूमैनिटेरियन आर्किटेक्चर इन पाकिस्तान की बात करें. ऐसे जब तक हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे और कम्युनिटीज का पर्सपेक्टिव लेके नहीं आएंगे, तो शायद जो रिजल्ट हम अचीव करना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम ना कर पाए. इसमें पेपर में चूंकि जब प्रेजेंटेशन हो रही होती है तो वो जरा ब्रीफ होता है ना, जो डिटेल में कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव है उससे बहुत सारी चीजें जो रिकमेंडेशन में आई है वो यही है, जितने गैप्स आइडेंटिफाई इधर हो रहे हैं कि पॉलिसी हैं लेकिन नीचे लेवल पे नहीं गई. लेकिन डिजास्टर की बिल्कुल सिंपल एक ही मिसाल है कि जब तक ये यूनियन काउंसिल लेवल और विलेज लेवल पे प्लान नहीं होगा, क्योंकि रिस्पॉन्ड उन्होंने करना है, वो उस वक्त तक ये सिर्फ आप समझ लें कि वक्ती तौर पे हम वेट करते हैं डिजास्टर आएगा बस काम चलाओ और काम खत्म करो. इस अप्रोच से निकलना होगा, जैसे मैंने पहले कहा. और लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट्स को ये रोल देना पड़ेगा हमें समहाउ. ये बेशक आप पॉलिटिक्स में वो शायद रेवलेटरी समझ रहे हो, लेकिन सिर्फ एक रोल दे दें, लोग कहें जी कि लोकल गवर्नमेंट सिर्फ DRR और डिजास्टर हैंडल करें, सियासत हम कर लेंगे, हमें उस पर कोई इतराज नहीं, वी आर हैप्पी विद इट. लेकिन ये रोल वहीं पे होना चाहिए, लेकिन इट शुड बी रिसोर्स्ड, प्रॉपरली रिसोर्स, अप्रोप्रिएटली रिसोर्स. तब जाके इस मामले को हम अपनी कम्युनिटीज को प्रिपेयर कर सकते हैं. ये नहीं है कि हम ये डिजास्टर को रोक लेंगे, वो तो होगा, लेकिन कम्युनिटी प्रिपेयर होगी तो बहुत सारी चीजें, जैसे हम इंटरनेशनल आपको बताते हैं कि हजारों वो हो रहे हैं, आ रहे हैं साइक्लोन, लेकिन वो 80 साल की खातून को भी पता है कैसे सरवाइव करना है. लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है. जी सर. वहां पे भी हमने इस चीज को रेज किया था कि हेगो का एक उन्होंने टेम्पलेट दी हुई थी, और टेम्पलेट में हम कुक करके चीजें डाल देते थे, ठीक है जी, और हम अप्रोच बाहर की दुनिया को बताते कि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, ठीक है जी. तो एक तो ये देखें कि इस वक्त जो आपकी SFDRR की जो नेशनल हमारी कंट्रीब्यूशन है उस सिस्टम में, वो इसके तहत कैसी है, एक इसको भी थोड़ा सा इसमें आप एड्रेस करें. और दूसरा ये कि क्या SFDRR का जो ग्लोबल या रीजनल तरीकेकार इनपुट देने का है वो सफिशिएंट है, और कीपिंग इन व्यू आवर लोकल कंडीशंस, जो कि हमें बार बार हम किसी ना किसी प्रॉब्लम में जा रहे हैं जाते हैं, उसमें ओवर एंड अबव दिस मॉड्यूल के जिसके तहत हम रीजनली या ग्लोबली उसी स्टीरियोटाइप के तहत इंफॉर्मेशन देते हैं, यहाँ पे इसके अंदर और क्या चीजें ऐड करने की जरूरत है या इसको कैसे मजीद इनोवेटिव बनाने की जरूरत है, एक ये. अच्छा, फिर इसी तरीके से NIDM की मैंने बात की कि NIDM को हमें किसी और साइड से देखना चाहिए, बनाना होगा. देन कोलैबोरेशन की बात हुई थी, तो कोलैबोरेशन में हमें डेवलपमेंट पार्टनर्स, NGOs, INGOs, CBOs, फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इन सारों को हमें क्या नाम है एक बॉडी की फॉर्म में कॉर्पोरेट सेक्टर को ला के फिर इसको हमें मॉडल की फॉर्म में आगे लेके चलना होगा. बेशक वो मॉडल नेशनल लेवल पे हो या रीजनल लेवल पे हो या किसी सूबे के लेवल पे हो या इवन कम्युनिटी लेवल के ऊपर हो. देन बेनिफिशियरी, देखें बेनिफिशरीज पार्टिसिपेशन हम क्यों कहते हैं, हम कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो हम कहते हैं कि पहले हम आंखें बंद करके कहते थे इतने लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना बड़ा जरूरी है, ठीक है. इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट के इशू चलते आ रहे हैं ना, तरबेला डैम के, मंगला डैम के, बाकी के. तो हम किस तरीके से कोई इंटरवेंशन ग्राउंड पे होनी है, जिस इलाके में होनी है, उस इलाके के लोगों को जो कि बेनिफिशियरी हैं उस फैसिलिटी के, उसका लॉन्ग टर्म क्या नाम है मालिक कैसे बना सकते हैं, बाय गिविंग देम द रोल ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, उसको वो ओन करें, ठीक है. देन हमारा जो PC1 का भी प्रोबेबली समबडी टॉक्ड अबाउट दी, आपने जिक्र किया था PC1 का. PC1 में हमारे EIA भी है,
एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, अगर प्रोजेक्ट छोटा है तो IEE है, ठीक है जी। फिर हम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी निकालते हैं। जो EIR आ रहा है, इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो हम ड्रॉ करते हैं उसकी फिजिबिलिटी स्टडी से, ठीक है। I have suggested it at many places कि अब हमें ये लाजमी करना, यार इसको भी नोट करें आप कि जी हाँ, दो चीजें और डालनी है। एक आपने डाली है CIA क्लाइमेट इम्पैक्ट असेसमेंट, और दूसरा DIA डैमेज इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। और उसको साथ आप ये लिखें, इसमें एक चीज और भी करें, ये I got that thing started when I was there in NDA में, और जिस वक्त मैं आया था कि मैंने फाइनल कर लिया था। 2009-2010 में DRR की एक चेक लिस्ट बनी थी, और जो कि प्लानिंग कमीशन से अप्रूव करवा के लाजिम किया गया था कि दिस चेक लिस्ट शुड बी द पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑल सोशल सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो जब तक कोई इस चेक लिस्ट को ओके करके कंप्लाई विथ नहीं करेगा तो वो प्रोजेक्ट अप्रूवल के प्रोसेस में आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब देयर इज अ डायर नीड कि 2009-2010 में के बाद हमने 14 साल का कवर किया, ग्राउंड में हमने कितने मैन मेड डिजास्टर्स और कितने नेचुरल डिजास्टर्स को देखा, तो उनमें से कितनी जो कि बेकार चीजें वो निकालें और कितनी प्रैक्टिकल चीजें उसके अंदर डालें उस चेक लिस्ट के अंदर, और उसको नए सिरे से बना के अप्रूव करवा के उसको PC1 का हिस्सा बनाया जाए। और इसको फर्दर इसमें ये ऐड कराएं कि प्लानिंग कमीशन का एक रोल ये है कि एनी प्रोजेक्ट costing 500 million rupees or more that requires to first pass through the sieve of feasibility study. तो फिजिबिलिटी स्टडी के लेवल के ऊपर DRR की कौन सी कंसिडरेशंस होनी चाहिए जो फिजिबिलिटी के अंदर भी शामिल हो, उस स्टडी का लाजमन हिस्सा हो। और फिर जो आपके किसी स्ट्रक्चर के या किसी उस फिजिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में तो प्रोजेक्ट बनना है, जब वो ग्राउंड पे आएगा तो उस प्रोजेक्ट में DRR अलाइंड एक्शंस या इंटरवेंशन जो है उसकी फाइनेंसिंग कितनी है और उसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कैसे इंश्योर की गई, इस चीजों को जरूर करें। अच्छा, फिर शिफ्ट फ्रॉम इवेंट ट्रिगर्ड अप्रोच टू प्रोएक्टिव अप्रोच बड़ा जरूरी है। सप्लाई ड्रिवन अप्रोच टू डिमांड ड्रिवन अप्रोच बड़ा जरूरी है। अच्छा, देन मैंने वो बात कर ली डिस्कनेक्ट बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल एक्ट्स एंड ऑल दैट, वो हमने बात। MHVR है जो 2016 में जहां छोड़ा था आज उधर ही छोड़ा हुआ है, ठीक है जी। हाँ, तो हमारी क्या नाम है कंस्ट्रक्शंस पे कैसे अब अच्छा, फिर हमारा एक वो रिवर एक्ट है जिसके साथ हम ये कहते हैं कि द राइट ऑफ वे ऑफ द रिवर शैल बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगी। व्हाट हैपेंड इन 2022, वो जो कौन सा होटल था, मुझे नाम नहीं उसका पता, सवात वाला, वो गिर गया, अब वो दोबारा बन गया। आपको मैंने वही देखा, वही मैंने देखा, वही बना हुआ है। हाँ, वही हनीमून है, ये क्या नाम है? हनी तो अब न्यू हनीमून बन गया। अच्छा, फिर टॉप डाउन एंड बॉटम अप बोथ अप्रोचेस शुड कंप्लीमेंट ईच अदर। अच्छा, हम बात कर रहे थे, अभी आप ही ने भी कोई बात की थी इसके ऊपर, ट्रेडिशनल अप्रोचेस में किस तरीके से इनोवेशंस को मॉडिफाई करके डवटेल कर सकते हैं ताकि हमारी उसकी सस्टेनेबिलिटी को करें। अच्छा, फिर व्हाट एवर हमारा स्ट्रक्चर बने वो कम से कम 3 से 4 ग्लोबल प्रोटोकॉल्स या फ्रेमवर्क्स को कंप्लाई विद करे। SFDRR, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, SDGs लाजमन करे। और मसलन ये भी एक आप कह लें कि जी फिजिबिलिटी और PC1 के लेवल के पर भी इन चीज़ों को लाजमन मजलूम कर दिया जाए। अच्छा, फिर इसमें एक चीज को और थोड़ा सा उठाने की कोशिश करें, वो ये कि देयर इज नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड बट पाकिस्तान विच जहां पे लॉस एंड डैमेज के फंड की यूटिलिटी फिट केस है, ठीक है। ठीक हो गया। आखिरी एक दो बातें और मैंने कुछ की थी। लोकल लेवल के ऊपर, कम्युनिटी लेवल के ऊपर, विलेज लेवल के ऊपर, सिटी लेवल के ऊपर कौन सी ऐसी लोकल DRR अप्रोचेस हैं
जिनको के हम टोपोग्राफी के लिहाज से, फिजियोग्राफी के लिहाज से कि बलूचिस्तान की बनावट कुछ और है, केपी की बनावट कुछ और है, उसकी मुनासबत से हम वहाँ पे उनको क्या कहना चाहिए, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, करेक्टराइज कर सकते हैं डिफरेंट उसमें, और फिर उसको हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। एकेडमी और उसकी मैंने बात कर ली, बस ये छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स थे। गरिमा जी, बड़ा इंटेंस डिस्कशन है और ये तो चलती रहेगी, लेकिन किसी डिस्कशन को किसी एक जगह लाके रोकना पड़ता है। सो देयर इज ए टाइम कि हम इसको स्टॉप करते हैं, और डे आफ्टर टुमारो 28 को हमारा इस जो सीरीज है उसका चौथा पोजीशन पेपर है, विच इज ऑन लॉस एंड डैमेज एंड पाकिस्तान केस। तो वो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में मैं पेश करूंगा। तो उसमें वो बिजी है, मैंने उनको बुलाया था लेकिन वो कहते मैं